Hello everyone, my name is Chetan Kumawat and I am physics faculty at Infinity Learn by Sri Chaitanya. So today we are here to discuss the JEE Main solution of 28th July Shift-2 evening session. Okay, so let us just start from the first question. As usual, first question is coming from unit and dimension, right? So the efficiency of Carnot engine, efficiency is something dimensionless, you know that, right? Dimensionless as well as unitless is given by this expression, and you need to find the dimension of alpha and beta, right? That is something we have to choose the incorrect option basically out of these four. Okay, out of these four what we have to do is incorrect option we have to find. So you know that this term is dimensionless, this is also dimensionless, so alpha beta will also be dimensionless, that is for sure, right? And whatever is written in the log is also dimensionless, that is again for sure, right? So just read the first option. Dimension of beta is same as that of force. So let me just find the dimension of beta first. So you know that beta x by kt is dimensionless, है ना? Basically it is m0, l0, t0. Kt is Boltzmann constant into the temperature, that is the dimension of energy. So beta dimension will be energy by x, and energy is basically the joule. Joule is force into displacement, so beta will have the dimension of force. So this statement is right, we have to choose the incorrect, right? Dimension of 1 by alpha, or you can say 1 by alpha x, is same as that of energy. So if dimension of beta is a force, so and alpha beta is dimensionless, so alpha is equal to 1 by beta in dimension, means 1 by alpha dimension should be dimension of beta only, that is in force, right? So alpha inverse is force, force into displacement will be work, that is basically the energy, right? So dimension, this is also right statement. Dimension of eta inverse sin theta is same as that of alpha beta. Alpha beta is dimensionless and this will also be dimensionless, right? Eta is frequency and sin theta is a mathematical function. So this one is also right, so the remaining one is wrong, so that should be my answer. Dimension of alpha is same as that of beta, they are not same, right? Dimension of beta is of force and dimension of alpha is 1 by 4, so both are different. Moving to the next question. So in this question there is a motion which is happening, a z coordinate is constant, right? Something like this is x, this is y, and this one is z. So this z coordinate is fixed and the motion is happening in this plane, where x is varying like this and y is varying like this, okay? And at t equal to 1 second you need to find the acceleration. So velocity in x direction you can write dx by dt, that is 3. If speed is constant, so acceleration in x direction is 0, right? Velocity in y direction you can write dy by dt, that is 15t square. Acceleration in y direction will be dv by dt, that is 13t. At 1 second I want, so at 1 second acceleration in y direction will be 30 meter per second square, and that is positive in direction, right? So answer should be B option. Acceleration of the particle is plus 30 in y direction. Moving ahead, a pressure pump has a horizontal tube of cross sectional is this. So there is a tube, and there is a wall like this. So water is going from this tube and there is cross sectional area A, which is given to you 10 centimeter square. Water is going with the speed of 20 meter per second. The force exerted on the vertical wall just in the front of the tube, which will stop water horizontally. We have to stop this water, and you know that in case of moving water the force becomes rho a v square, and it comes by the Newton's second law, F equal to dp by dt. So density of water is 10 to the power 3, area is 10 into 10 to the power minus 4, velocity square, velocity is given to you 20, so its square will be 400. This term will get cancelled and force will be 400 Newton, that is D option. Alright, moving ahead, good question from NLM, I can say. Generally we do not do the this question. Yeah, uniform metal chain of mass m and length, total length is capital L. This is something given to you this in this situation. Whatever is the acceleration of chain is, that is given to you g by 2, and you have to find the value of x. How much is this part? L is, small l is actually
L by x. So indirectly you have to find the value of L, small l. If you are able to find the small l, then you can compare with this and you can find the x, right? So you know that if this length is L, this will also be L, so the remaining length will be L minus 2L, right? This is L, this will be L, so remaining length will be L minus 2L. All right, so this whole mass will move due to its weight only, right? So I can write its mass as lambda, that is mass per unit length, and just multiply with the length. So this will be the hanging mass, and its force divided by the total mass, that is lambda into L. That acceleration is equal to g by 2, right? Net pulling force upon total mass, that is the formula for acceleration, right? So we are doing that thing. So from here I can write L minus 2L is equal to L by 2, small l will be L by 4 if you will compare with this. So the value of x is 4, the value of x is 4. Moving ahead, a bullet of mass 200 gram having initial kinetic energy is 90 joules. So can we calculate the speed? 90 is equal to half m v square. So v is actually equal to 30 meter per second square, and it's initially, so let us just say u. Okay, and it's shot inside a long swimming pool as shown in the figure. Its kinetic energy reduces to 40 joules. So can we calculate the final speed? 40 is equal to half m into v square. So v square will be 400, means v is equal to 20 meter per second. Speed is getting decreases because there is a water resistance, and that resistance we have to take constant because nothing is given in the question. So I can write v is equal to u plus 80. Final speed is 20, initial is 30. So and the whole process is happening in 1 second. So acceleration I can write as minus 10 meter per second square, right? Acceleration is minus 10 meter per second square, and I need to find like this change in speed happened at what distance. So I would apply third equation of motion because I need to find the displacement. Final speed is 20, so 400, initial speed is 30, so 900, acceleration is actually deceleration, so minus 10 into s I need to find. So it is 500 by 20, 25 meter is the distance traveled by this bullet to happen this process 30 to 20. That is D option. All right, moving ahead, bullet has to travel so that one mistake is there. The question is not asking how much 30 to 20, question is asking you when it will become at rest, है ना? So instead of doing this, what we can do is final speed, initial speed plus 2 into acceleration into distance. So it will be 900 divided by 20, 45 meter is the distance, right? So this 30, the 25 plus 20, it will also move because finally we want at rest. So total will be 45 meter, not 25, है ना? So that is something we have to read in the question, like they are not asking in this process, they are asking after how much distance it will become at rest. Moving to the next question, assume there are two identical simple pendulum, time period of simple pendulum से question दिख रहा है ये, है ना? One is placed on the earth, the second one is at a space station located at height h. Right, so time period is given by 2 pi root L by G. So in case of initial, G will be G only, right? And in second case, 2 pi root L by, it is at some height, and at some height G is given by G upon H by R to the whole square, right? 1 plus H by R to the whole square. So I can write it, T2 is actually equal to T1 times of 1 plus H by R, right? So clock 1 and clock 2 time periods are given, T2 is given to you 6 seconds, so it will be equal to 3 by 2, 1 plus H by R. So H by R is equal to, is there anything wrong? Let me just check if everything is fine. It seems everything is fine. The value of height h is given by this only, that will be this will be T1 is 4 seconds, this is 3 by 2, everything is right?
So H will be R by 2, that means 3200 kilometer is the height from the ground surface, right? So that is my final answer. R by 2 means 6400 divided by 2, 3200 is final answer. Moving to the next question from Bernoulli's theorem. Good question, good application. What you need to do is, you are having a disk, so and there you are having a hole, so water will come out. You have to find the speed of water. If there is only atmospheric pressure, so definitely we can apply the formula directly, V equal to root 2 GH. But instead of atmospheric pressure, the total pressure is given, basically force is given to you like this, and here the pressure is P naught. So just apply the Bernoulli's theorem from here to there. So initially force is given, so I can write the pressure, right? Force upon area, and radius is given to you 1 meter, plus if potential energy, I assume here 0, so potential energy at this height will be rho g into h. This h is 10 meter, equal to P naught is the final pressure into, I need to find its speed, and area of this is very high because this is 1 meter. So I can take their kinetic energy initially 0 and final kinetic energy is this, final potential energy is 0. Alright, so just try to reduce this expression. 5 into 10 to the power 5 upon pi, rho is, we are talking about water, right? Yeah, so rho is 10 to the power 3, so this will also become 10 to the power 5, this is 10 to the power 5, 10 to the power 3 by 2 into V square. I need to find V square, 10 to the power 5, 10 to the power 5, 10 to the power 5, it will be minus 2. So what I can do is, this will get cancelled, 10 to the power minus 2, so V square will be 10 to the power 3 divided by pi. 10 to the power 3 divided by pi means 1000 by 3.14, so it will be approximately 300 say thoda sa less, 300 something, and its square root should be 17 point something, right? So that is my C option, right? We are getting 300, so obviously square of 17 is 289, so if you are getting 300 means it will be approximately 17.8. By seeing the option we can answer. Moving to the next question, a vessel containing 40 gram of nitrogen gas at a temperature of 27 degrees centigrade convert into SI units means 300 Kelvin. The amount of heat to be transferred to the gas to double the RMS speed, right? RMS speed is proportional to T. So if you are doubling this RMS speed means final temperature is actually equal to 4 times of initial, then only this RMS speed will get twice, right? Because you have to, it increases as a square root of temperature. So T2 is 4 T1 and you need to find the heat transferred. Everything is happening in a vessel, so volume has to constant means work done will be 0. So Q by first law you can write U, and U is NCV dt. Can we find the number of moles? 14 gram is there, so number of moles will be 14 by 28. And nitrogen is there, so it's a diatomic gas means 5 by 2R, and dt is 3 times of initial, right? Final is 4 T1, initial is T1, so difference will be 3 T1, 3 into T1 is 300. Alright, so this is 2, 150, so it will be 15 into 150 divided by 2 into R. Okay, so 15 into 75, R value is 8.314 in SI unit. So if you will do this calculation, it will be 9360 joule. And I can show you also how it is coming. 15 into 8 is approximately 120, right? And 120 into 75 will be something 0.06900, right? So obviously it has to come approximately 9000, that is only in C option. So you don't have to be exact in the exam, I always say this, just make sure you are applying a concept properly and then match with the answer directly. No need to go till this step even also, just from here just make the idea, yeah, it is coming approximately 9000, so answer will be C. Moving to the next question. So this is a very simple question. You are having a capacitor like this. Initially in air its capacitance is given by C naught, and you are inserting a dielectric of thickness 3D by 4. So what will be the effect on capacitance? You know that if you insert a dielectric of
T thickness, the new capacitance is given by D minus T plus T by K, right? So A epsilon naught divided by D minus thickness is 3D by 4 plus 3D by 4 K will be there. So D minus 3D by 4 is D by 4. So C will be A epsilon naught divided by D by 4 if I will take as LCM. So it will be 1 plus 3 by K, right? And A epsilon naught by D is already given in the question as C naught. So C naught 4 K divided by K plus 3 should be my final answer, that is given in A option. So A is right. Direct formula based question, I would say, such a simple question. Moving to the next question. Again, this example is given in NCERT also, right? Direct question from NCERT. But I would say this is an easy question from NCERT because this is having very easy calculation, right? So if a particle is moving like this, which particle is this? Let us just read the question. Electron is there. So electric field is in downward direction, so force will be in upward direction, electrostatic force. So definitely it has to deflect like this, not like this, because force is in upward direction. But if you see in this direction, there is no force, so speed has to be constant, always 2 meters per second in x direction. So what will be the time to travel 1 meter? Speed is equal to distance upon time. So time taken by particle to reach to the other end will be 1 by 2 second, half second, right, to reach the other second. All right, and speed at this instant will also be in x direction 2 meters per second. Somehow I have to calculate Vy. And for that I can apply the first equation of motion, but I don't know the initial speed is 0, but I don't know the acceleration. So let us just find the acceleration. So electrostatic force will be E into capital E, right? Charge into electric field. So acceleration will be EE by m. Force by mass. Alright, so velocity in y direction will be Ay, that is EE by m, time is half. So just put all the values of E and m here. Yeah, electric field is given to you 8m by E, so this makes our question very simple, 4. So if this is 4, so definitely tan theta is the resultant velocity, and resultant makes angle theta with this 2, so I have to take 4 by 2, that is 2, means theta is tan inverse 2. Such a simple question, because there in NCERT you will find there is so much calculation here, because you have to put capital E and m, but here electric field is already given in the terms like you can cancel them. So this is a easy question, I would say. Moving to the next question, a uniform wire of resistance 80 ohm is cut into 4 equal parts. You know that resistance is given by rho L by A. So if you cut into the 4 equal parts, means length is getting 1 by 4, means resistance will for one part will be 20 ohm. So like this you are having 4 parts, right? Now you are connecting them in parallel. So if you will connect them equal resistance in parallel, so equivalent will be R by 4, and one is having 20, so equivalent will be 5 ohm, right? And what statement one says is 5 ohm, so this one is right statement. Moving to the next statement, two resistances 2R and 3R are connected in parallel in an electric circuit. The value of thermal energy developed in 3R and 2R will be in the ratio 3:2. So you need to check, you need to see like there is a parallel combination, and in parallel combination you have potential difference same, right? If potential difference is same and you need to find the thermal energy, means V square by R into time. So it is actually inversely proportional to 1 by R, right? So if you need to take the ratio of 3R to 2R, so answer should be 2 by 3 because it is inversely proportional, but statement says 3:2. It should be exactly opposite to this ratio, the given ratio. So this one is wrong, means first one is right and second one is incorrect. So answer should be C option. Answer should be C option. Moving to the next question, a triangular shaped wire carrying this direct formula based question. So you know that force on a current carrying wire is given by IL cross B vector. So if L is in this direction, B is in this direction, if you will do L cross B, force will be in downward direction. If you will do L is in this direction, B is in this direction,
So L cross B force will be in this direction, and in this case L cross B force will be in this direction, downward direction. So by resultant, or if you know the effect, you can take this L effect directly, you will get the same answer, because you have to finally subtract them, right? So after subtracting you will have this length only. So if this is 5 by 2, this is 5, so this will be 5 root 3 by 2. Okay, so force you can write I L effective into B. L effective you know, so current is given to you 10 ampere, L effective is 5 root 3 by 2 into 10 to the power minus 2, because that is in centimeter, into magnetic field. Magnetic field is half Tesla, 0.5, right? So this is 525 into 1.73 divided by 2 into 10 to the power minus 2. So it is 7 and 7, 2, 18, 25 and 18 will be 43 divided by 2 into 10 to the power minus 2. It will be 0.216 Newton. That matches with C option. Alright, moving to the next question. Magnetic field at the center of a current carrying circular loop is B1, and the magnetic field at a distance of root 3 times of radius of the coil. Means you have a coil and you want to find the magnetic field at this distance, and at axis magnetic field is given by mu naught I r square upon r square plus x square to the power 3 by 2. So it will be mu naught I upon 8r, and at center there is 2, so it will be 2 times of this, and 1 by 8 times of mu naught I upon 2r you can write, and this is the magnetic field at center, right? So magnetic field on the axis is actually 1 by 8 times of magnetic field at center. So this is my B2, this is 1 by 8, this is B1, and ratio is asking B1 by B2. That means answer should be 8. That is in C option. All right. Easy question, again direct formula based question. Moving to the next question, again direct formula based question, but people do skip the transformer part in AC chapter, but you should not skip, because JEE Advanced even ask from this topic questions. So you are having a primary voltage this, secondary voltage this, so I can say it input, I can say is at output, and load power is given to you this. Assume the transformer to be ideal with purely resistive. So if there is only purely resistive load, then only power will be equal, like V in I in is equal to V output I output is equal to actually power. And what you need to find is unity power factor is given. All right, the loads in the primary and secondary circuit would be, you need to find the load in primary and secondary circuit, means resistance value, and you know the voltage, so you can write as like this also, V in square by R in is equal to P, that is given to you 80 into 10 to the power 3, 80 kilowatt. So input resistance is V in, that is 8 into 10 to the power 3 whole square divided by 80 into 10 to the power 3, 64 into 10 to the power 3 divided by 80, 8 times of 10, it is 800 ohm. So input resistance should be 800 ohm, that means A and C can be right. And let us check about output. For output again same formula, V output ka square, V output is 160 divided by power, power is 80 into 10 to the power 3, right? So it will be 16 into 16 into 10 to the power 2 divided by 8 into 10 to the power 4. So it is 2 times, so it will be 32 into 10 to the power minus 2, means 0.32 should be right answer. It means C option is the correct one. Direct formula based question again. Moving to the next question, sunlight falls normally on a surface area of this. Question from photon theory, and if a light is falling on a surface and it is completely absorbing, then the force is given by IA by C, and if it is completely reflecting, then the force becomes 2IA by C. But in this case
It is complete absorption, means IA by C. Alright, and we need to find the intensity. So intensity will be force into C by A. Do you know the value of force? Yes, 7.2 into 10 to the power minus 9 Newton. The value of C is 3 into 10 to the power 8. Do you know the value of area? Yes, 36 into 10 to the power minus 4. It is 12. So I will be 0.6 into 10 to the power minus 5 means 10 to the power 3. So it is actually 600 watt per meter square should be my answer. But options are given in watt per centimeter square. So let us just convert into centimeter square. So answer should be 0.06 watt per centimeter square, that is D option. Alright, moving to the next question. The power of a lens is given to you this, and they can write you in diopter also, right? This is in meter inverse. In particular medium, refractive index of the lens is this, radius of this curvature is this. The refractive index of the surrounding medium you need to tell. You know that if this is the surrounding medium and this is the lens, then its focal length by lens maker formula is given by mu of L, mu of surrounding, or you can write mu relative also, minus 1 upon R1 minus 1 upon R2. This entire term value is given to you 1.25. Mu of lens is given to you 1.5. Mu S is something you need to find. R1 is given to you plus 20. R2 is given to you minus 40. One more thing you need to keep in mind, that 1 by F, where here we are putting in centimeter, but here we have put is in meter inverse, right? So let us just convert into meter inverse. So 100 se divide karne par we will get into centimeter also, right? All right, or you can write 1.25 is equal to 1 by F. So F is 100 by 125 meter, it means 4 by 5 means 0.8 meter. So 80 centimeter you can write. So you will write here 1 upon F means 80, you can also write like this, equal to 1.5 minus mu S minus 1. 40 you can take as LCM, upper will be 30. This is 2 times 1 by 6 plus 1 is 7 by 6 is equal to 3 by 2 into mu S. So mu S will be 9 by 7. Mu S will be 9 by 7. That is in B option. Alright, moving ahead. Two stream of photons possessing energy is equal to 5 and 10 times of the very simple question. In first case you are having 5, in second case 10 times of work function, right? And due to Einstein relation, K max is given by E minus phi. So in this case V max square is proportional to E minus 5, that is 4 phi. In this V max square will be proportional to E minus 5, that is 9 phi. Alright, you just divide them, the ratio will be square root of 4 by 9 means 2 by 3. This is a square, so you have to take the square root to take the ratio, and 2:3 is my final answer. Very simple question from photoelectric effect. Moving to the next question, a radioactive sample decays 7 by 8 times its original quantity in 15 minutes. 7 by 8 is decaying, right? So remaining is 1 minus 7 by 8 means 1 by 8, or you can write 3 half-lives. So if original quantity is this process is happening in 15 minutes. Okay, so 3 half-life you needed, and that 3 half-life is given to you 15. So T half should be 15 by 3 means 5 minute. 5 minute is the half-life. Alright, 5 minute is the half-life for the, because 3 half-life value is given, not half-life is given. Alright, half-life is the question which is asked. Next question is from transistor chapter. Again a simple chapter. You know that voltage gain is given by beta times of R output upon R in. Voltage gain ko you can write output voltage upon input voltage, beta R output upon R in, right?
Output voltage is given or not? No, we have to find. Input voltage is given as 1 millivolt, beta value is 100, output resistance is 10 kilo ohm, input resistance is 1, so 10 to the power minus 3, 10 to the power minus plus 3 will become 1, so answer should be 1 volt, that is in B option. Alright, moving to the next question. I would say this is a tough question according to the JEE Mains aspirant, because bandwidth frequency is something, do not remember this students. FM broadcast resistor, and the important thing is deviation ratio generally we skip, right? Deviation ratio is given by deviation in frequency by frequency, that is 10. So deviation in frequency you can write 10 into frequency is given to you 20. So 200 kilohertz is the deviation in frequency. You need to find the bandwidth, and bandwidth is given by 2 times of f plus delta f. F is 20, delta f is 200, right? So it will be 2 times of 220, means 440 kilohertz should be my final answer, that is given in D option. Alright, moving to the next question. A ball is thrown vertically upward, again a simple question from kinematics, but you need to make it simple, है ना? It doesn't seem simple question, but it will be simple if you will read the question very properly. You are throwing a ball with speed of 19.6 meter per second from the top of a tower. The ball strikes the ground after 6 seconds, means total time of flight, means total time of flight is given to you 6 seconds. Total time of flight is given to you 6 seconds. The height from the ground up to which the ball can reach, this height you need to find. So let us try to calculate this time first, है ना? The height from the ground up to which the ball can reach, means this total height you need to find, not this one. Okay, so can I calculate this total time somehow? Because I know this total time is 6 seconds. So you know that from here to here the time taken will be, from first equation, final initial plus acceleration is 9.8 into t, means this time will be 2 seconds. So from here to here total time is 2 seconds, from here to here again 2 seconds, and total is 6, so this will also be 2. So I can say that from here to here time taken is 4 seconds, and this is something, speed is 0. So if a particle is released, how much distance it will travel after 4 seconds, right? So S is equal to ut plus half a into t square, t is 4. So it is 8 times of 9.8, right? That is 4. You have G is 9.8, K by 5 in terms you can find also. So it will be something like this, right? And this is something given to you K by 5. So K will be 22, 42, 4, 39. So the value of K should be 392, right? Because the height is 78.4 meter. So it's your choice how you apply the question. People have do this question by applying the second equation of motion, they will find this h, and by applying u square by 2g they will apply this, they will find this h, then they will add this one. But this is a simple method, right? So you should know like where to where we have to apply the question to get the answer in minimum time. The next question is a good question from center of mass. We do these type of questions whenever we do. सजेशन मिलेगी मलिक बिलाई, आपको क्या सजेशन चाहिए बताइए, है ना? We do these type of questions while reading the center of mass. So you are having a rod like this, and let us just say this is the dm mass at x distance, so its length is dx. And you know that in case of variable masses, the center of mass location is given by dm into x divided by dm. And in case of linear mass variable, you can write dm as lambda dx or rho dx, right? So lambda is or rho is given to you this 1 minus x square by l square into x into dx, this dx, alright. In the same way here you can write lambda or rho into dx. Rho naught is constant, so you can take it outside,
means it will get cancelled. So center of mass location will be x, you will multiply x minus x cube by L square into dx divided by integration of 1 minus x square by L square into dx. Limits are pretty much clear, we have to find for the total length, so 0 to L. Just integrate it now. So x integration is x square by 2, this will x की power 4 by 4, so it will be again L square by 4 divided by x, 1 integration is x, so L minus L by 3. So you can express this in a very simple term. The numerator will be L square by 4, denominator will be 2L by 3, so answer will be 3L by 8. Okay, so just compare with this expression, the value of alpha is 8, that is my answer. Alright sir, second drop ठीक रहेगा. सेकेंड ड्रॉप नीट के बच्चे हो क्या आप मलिक? नीट की बात कर रहे हैं या जेई की? क्योंकि जेई में भी 3 अटेम्प्ट होते हैं ना, जेई मेंस में ओनली, नॉट इन जेई एडवांस. तो मूविंग अहेड, है ना, ये क्लियर करो आप. जेई मेन में आप सेकेंड ड्रॉप बिल्कुल ले सकते हैं, बट मैं जानना चाहूँगा कि आपके इस बार कितने मार्क्स आए हैं, है ना, दैट इज समथिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Moving to the next question, area of cross sectional is given, length is given to you, is connected with a rigid body of mass 2 kg, mass is 2 kg, the body is rotated in a vertical circular path of this, and you have to find the, at the bottom of the circular path, strain you have to find, है ना, at the bottom of the path. आप marks बताइए मलिक, फिर मैं बताता हूँ आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. All right, या परसेंटाइल बता दीजिए या मार्क्स बता दीजिए. All right, so at this point we have to find the strain, है ना, and by Hooke's law if we know the stress and value of y, so we can find the strain, right? So let us try to find the stress, and to find the stress we must know the force, right? So let us say this is tension, so tension minus mj is centripetal force, so my tension value will be m v square by r plus g. Mass value is 2 kg, v square is 25, radius is or length is 1 by 2 plus g is 10, so it is 60, 120 Newton is the force. 120 सर स्कीम हुआ मेरे साथ, 119 मार्क्स आए थे बट परसेंटाइल हैं नहीं, फिर तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए बेटा, ये तो बहुत ही गलत बात है. 28 यदि आपका परसेंटाइल है तो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए आपको, right? So strain is actually equal to stress upon y. 119 मार्क्स तो बहुत मतलब 119 मार्क्स है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, बट ये गलत हो जाएगा. यदि आपका परसेंटाइल 28 है तो नहीं लेना चाहिए. Stress is force upon area, area is 4 into 10 to the power minus 6. You have to divide by Young's modulus, that is given to you 10 to the power 11. So it is 30 into 10 to the power minus 5, means 3 into 10 to the power minus 4 is my strain. If you will compare with this, so here it should be 30, right? 30 into 10 to the power minus 5. और सर रिजल्ट में स्कीम हुआ मेरे साथ, मुझे लग नहीं रहा क्योंकि इतनी मिस्टेक्स करता नहीं है वो, तो सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट होता है मलिक, ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से. Moving to the next question, at a certain temperature the degree of freedom per molecule for the gas is 8. Degree of freedom is given to you 8. The gas performs 150 joule of work when it expands, means work done is positive, that is 150 joule under constant pressure. Oh, constant pressure, you can write the work done as nr delta t, and if you want to find the change in internal energy, so it is ncv dt. Cv is f by 2 r, means nr dt, and this value is 150, f is 8, so you can find internal energy change is 600 joule. So if you know the work, if you know the internal energy, the amount of heat by the first law is q plus u, u is this, q plus w, w is this, 750 joule should be my final answer. All right. पूरा साल पढ़ाई की अच्छे से बेटा. 28 और 119 में कुछ तो दिक्कत लग रही है मुझे, है ना. एक बार इसको फाइंड करो आप.
The next question is, you have a potential energy of a moving particle like this, you have to find the time period for a small oscillation. So if you know the potential energy, you can calculate the force as minus dV u over dV x. So it will be minus will be plus 4 differentiation of cos 1 minus cos 4x, something like this, right? So first differentiation will be 0 and it minus will be plus 4 sin 4x. And if you are having a small displacement, means x is very small, so what you can do is sin theta can be written as theta, so it will be minus 16 into 4x. Yeah, it should not be here 4, yeah, it is actually 4, constant you can take, and while differentiating, yeah, 16 into 4x, everything is right, so minus 64x is there. Alright, so if you compare with f equal to minus kx, so k value is 64, time period is given by 2 pi root m by k, m is 4, k is 64, so it is 16, so time period will be pi by 2 second, right? Time period will be pi by 2 second, means this k should be 2, this k should be 2. Moving to the next question, I would say again a simple question in terms of concept, but yeah, by calculation it seems little bit tough, but I will try to make this calculation easy also for you. So you are having an electric bulb of this rating are connected in series, an electrical bulb connected, another bulb which has this much reading. So let us rating always helps us to find the resistance value. So first resistance will be V square by P, okay. Second resistance will be V square by P. So if I assume this as R, so this will be something 60 R by, this will be 3R by 5, right? If this I assume R, so this will be 3R by 5. So both are connected in series, R and 3R by 5, and they are connected to a battery of 220 volt. And now the power consumed by the, so what will be the current? Current will be EMF upon total resistance, that is 8R by 5. And I need to find the power consumed in 100 watt bulb, in this bulb, right? So power in this bulb will be I square into its resistance. I square means this square, that will be 25 divided by 64 R square into V square, this is again V, right, into 3 by 5 into R, and R value is V square by 60. Let us just put here only R. Okay, so it will be 5 3s are 15 upon 64 V square by R, and V square by R is actually 60, right? So just see here, it will be 20, it will be 1, it will be 15, and it will be 16, right? And they should cancel. Let us just check if anything is wrong. V square by R is there, I is current by voltage by this is right, 8R by 5 is right. So if we are squaring this, so 5 will go up, 25 by 64 R square into V square, that is my current square, 3 by 5 into R, everything is right, you can write as VR by, ठीक है. From there let us just check, V square by R value is 60. So 60 into 50 225 upon 16 is my answer. Acha, about they are asking means obviously answer need not to be exact. So what you can do is 1 6 14.07 volt something will be there. So it is about 14 volt. So 14 is my right answer. 14 is my right answer. Nothing to worry about. Moving to the next question. You are having a circuit like this. So whenever you are closing the switch, you need to find the current in the circuit.
So you know that initially there was no current in this, and inductor doesn't like any sudden change. So finally it will not have any current, means the whole current will go from this, and will circulate in this circuit only, and the total resistance is 2 plus 4, that is 6. So 6 by 6 is 1 ampere. Very simple question, right? Moving to the next question. This question is repeating kya? Yes, this question is repeating 2 times. Answer is 1 ampere. Moving to the next question, an object O is placed at 100 centimeter. So this distance is given to you 100 centimeter in front of a concave mirror. If radius of curvature is 200 centimeters, so focal length will be half of it, and it will be negative because it is a concave mirror. The object starts moving towards the mirror at a speed of 2 centimeter per second. We have to find the location of image at 10 seconds. So in 10 seconds, the distance will be speed into time, that is 20 centimeter. Right? So initially it was at 100 centimeters, so finally it will be at 80 centimeter. So by mirror formula, 1 by u plus 1 by u, vu is equal to 1 by f, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. I need to find v. U is minus 80, focal length is minus 100. So 1 by v is equal to 400, 5 minus 4. Right? So v is equal to 400 centimeter, very far away from the mirror, and it is coming positive, I guess. 400, 5 minus 4, yes, positive means virtual image, very far away. But obviously it has to be virtual because focal length is 100 centimeter and you are putting between focus and pole, so image has to be virtual, and answer will be 100 centimeter. Moving to the next question. In an experiment, again a direct formula based question, you must know that if this is an object, this one is a focus, and this distance is x1, this is an image, and this is like second object, the second focus, this is x2, and then x1, x2 is actually given by f square, and this term is already given to you as 2 to 5. So your focal length should be 15 centimeter. This was a simplest question, again direct, but you should know the Newton's formula, hai na? This is called as Newton's formula in optics. Object distance is measured from the focus, that is something u dash, and in the same way you have measured the distance from the focus for the image also. Okay, and the product was given to you 2 to 5, so answer is 15 centimeter. That's all. Thank you. So we are now going to discuss about the paper of 28th July basically, or Shift-2. Okay, that is the evening session. We are going to discuss about the evening session in this lecture. Okay, so we are going to discuss this. So let's go to the first question. So this is the first question actually. Given below are the two statement, one is labeled as assertion and the other one is labeled as reason. ठीक है, तो दो यहाँ पे statement है, एक assertion है और दूसरा आपका reason है. ठीक है, और assertion ये कह रहा है कि zero orbital overlap is an out of phase overlap. ठीक है, होता क्या है एक्चुअली zero overlap अगर देखोगे तो ये बेसिकली अगर मान लो कि s ऑर्बिटल आप ले लेते हो, ठीक है, और इसकी ओवरलैपिंग आप कराने ले जाते हो किसी p ऑर्बिटल से कुछ इस प्रकार से. ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इधर आपका देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव ओवरलैप. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेगेटिव ओवरलैप हुआ है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैप. अब क्या है कि पॉजिटिव जितना ओवरलैप हुआ है वो नेगेटिव वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो ओवरलैपिंग आ जाएगी, तो आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग है. ठीक है, इट रिजल्ट्स ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल. बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर मेटेलिक कैरेक्टर. तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पीरियोडिक टेबल में इनको एक बार प्लेस करके देख लिया करो. ठीक है, तो जैसे अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल में प्लेस करोगे तो यहाँ पर आपका सोडियम होगा. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बेरिलियम होगा, यहाँ पे कहीं पे Mg होगा, फिर यहाँ पे कहीं पे सिलिकॉन और फॉस्फोरस होगा. अब आपको तो पता ही है कि जो आप अगर डाउन द ग्रुप आते हो, ऐसे से ऐसे आते हो, तो आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होता है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज होता है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब आप इसी में, ठीक है, इसी में जब आप ऐसे जाते हो तो क्या होता है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है. ठीक है, तो अब आपके लिए तो आंसर करना बड़ा वो है, आसान है. ठीक है, इधर से इधर डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें तो ऑर्डर ये आने वाला है. ठीक है, फिर ये वाला पोजीशन
यहाँ बीच में आएगी। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी बेरिलियम से, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार का आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फिर वही असेसन रीजन वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि द रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज ईजियर इफ द मेटल इज फॉर्म्ड इन द लिक्विड स्टेट देन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। बिल्कुल सही है। होता क्या है, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहानी है कि इस डेल्टा एस पे बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब अगर ये डेल्टा एस बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर डेल्टा एस बढ़ रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर पॉजिटिव है अगर हम मान लें और ये नेगेटिव होता है क्योंकि वो रिएक्शंस का, तो बेसिकली अगर ये बढ़ेगा तो डेल्टा जी जो है वो क्या होता जाएगा बेटा, घटता चला जाएगा। और डेल्टा जी जितना घटता है यानी उतना नेगेटिव होता है, उतना नेगेटिव होगा तो उतना ज्यादा स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी। इसलिए लिक्विड्स का जो आप देखते हो रिडक्शन वो इजियर होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, ठीक है, एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, ठीक है। रीजन की बात करें, ठीक है, तो रीजन में यही लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव साइड एज द एंट्रोपी इज हाइयर इन द लिक्विड देन द सॉलिड। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एकदम ट्रू हैं और दोनों के दोनों एकदम एक्सप्लेन्ड भी हैं, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है एक्चुअली। अगर आप इसी दिन का 28 का ही Shift-1 का पेपर देखोगे तो उसमें भी यही सेम सवाल पूछ लिया था इन्होंने, ठीक है। तो दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। और सवाल ये था कि प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर में अगर आप जैसे जो भी आपके पास इंप्योरिटीज है, अगर आप उसको ट्रीट करते हो क्लार्क मेथड में, क्लार्क मेथड में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर MgHCO3 भी ले सकते हो और इसको भी आप क्या करो बेटा, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपको तो कैल्शियम कार्बोनेट एज ए प्रोडक्ट मिलता है और इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, पर Mg जो है वो MgOH होल ट्वाइस के तो फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट और ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है इन दोनों में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, Shift-1 में भी सेम क्वेश्चन आया था, इवन क्वेश्चन नंबर भी शायद चेंज नहीं था, वो भी 4th वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है कि अलॉय ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज यूज्ड टू, ये एस ब्लॉक के में ना इनका अपीयरेंस वो दिया हुआ है मतलब एक्चुअली, ठीक है। तो एस ब्लॉक में ना कुछ यूजेस दिए गए हैं मेटल्स के, जो आपको बेसिकली मैं बता दूं कि जब आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस में इस पे क्वेश्चंस बड़े कम आते हैं, बल्कि आए ही नहीं आज तक अच्छे से सवाल। लेकिन जेई मेंस में एस ब्लॉक के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, उनके एप्लीकेशंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम का एक अलॉय है और वो एयरक्राफ्ट प्लेन, नहीं गलत है, ये आर्मर प्लेन्स बनाने में यूज होता है एक्चुअली, ठीक है। आर्मर प्लेट्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। जो वो ऐसे लेकर तलवार वगैरह से लड़ते हैं ना, तो जो यूज होता है उसको आर्मर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। द मैग्नीशियम आयन आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, नहीं ये गलत है। मैग्नीशियम नहीं, कैल्शियम 2+ आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, थायोनिल क्लोराइड की बात करें SOCl2 को कहा जाता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन ये लोग करा रहे हैं P4 व्हाइट से, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन में वो मिलता है आपको PCl3 along with बेसिकली SO2 भी प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है, और S2Cl2 भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। मेन प्रोडक्ट जो होता है वो PCl3 SO2 होगा। तो जो आपको फाइनल आंसर, अच्छा पूरा प्रोडक्ट ही पूछ रखा है, पूरा प्रोडक्ट ये है फिर आपका, ठीक है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 विथ आयोडीन, इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बताता हूँ। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं जो अच्छे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, अगर उनकी रिएक्शन आप किससे कराओगे बेटा, उनकी रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 से कराओ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कंसंट्रेटेड HNO3 की बात हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 से कराओ तो ये बेसिकली प्रोडक्ट देते हैं आपको इक एसिड, ठीक है। ये क्या बना देता है बेटा, ये इक एसिड बना देता है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इक एसिड बना देता है। जैसे अगर कार्बन से कराओगे तो कार्बोनिक एसिड, सल्फर से सल्फरिक एसिड, उसी तरीके से क्योंकि आपने यहाँ पे आयोडीन यूज किया हुआ है तो आपको मिलेगा यहाँ पर आयोडिक एसिड मिलेगा, ठीक है। आयोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HiO3, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, खुद को वो रिड्यूस कर लेता है NO2 और H2O में, ठीक है, तो ये तो पता ही होगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, SM2+ है, फिर हमारे पास ER3+ है, ठीक है, फिर हमारे पास YB2+ है, फिर हमारे पास LU3+ है, फिर हमारे पास यूरोपियम 2+ है और TB4+ है, ठीक है, और फिर यहाँ पर TB2+ भी है, ठीक है, और लास्ट में TM4+ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इसमें 62 थे तो 2 निकाल दिए, 60 बचे, ठीक है। ER3+ में कितने थे, ER है ना, ER इसमें दिया नहीं है, अच्छा दिया हुआ 68 था, 68 से 3 निकाल दिया, 65 बचे, ठीक है, 65 आ गया। या YM में 70 था, 2 निकाल दिया, 68 बचा। LU+ में LU+3+ है तो इसमें भी 68 ही बचा। U2+ में कितना बचा बेटा, 61 बचा, ठीक है। TB कितना है, 65 है, 4 निकाल दिया तो कितने बचे बेटा, 61 बचे। TB2+ में 63 बचा और TM वाले में 4 निकाल दिया तो 65 बचे। अब मैच करा लो कि किस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और किस में नहीं है। तो ये वाला पेयर तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है। ये वाला पेयर देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये, ठीक है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। ये वाला अगर देखें तो ये वाले में 61 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा वो B एंड D हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर जो है वो B एंड, नहीं सॉरी, क्या पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी। तो A और D आपका आंसर है। अगर कुछ इसमें 2 ऑप्शन तो मैच नहीं कर सकते, ठीक है, तो मे बी देयर इज सम करेक्शन, बोनस हो जाए या दोनों आंसर हो जाए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पर मैग्नेट टाइट्रेशन आर नॉट परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि जो KMnO4 है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं ज़रा समझना, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रिएक्शन जैसे ही आप HCl से कराओगे, यहाँ पे Cl-1 में ये इसको क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में MnCl2 वगैरह भी मिलता है बाई प्रोडक्ट। तो ये प्रॉब्लम है कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। रीजन देखते हैं, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ, बिल्कुल सही है, ये भी यही तो बताया था मैंने रीजन की, कॉन्सिक्वेंसली आपको क्या मिल जाता है बेटा, Cl2 मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों सही हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, और इनको आपको लिस्ट 2 हाइब्रिडाइजेशन से मैच कराना है। तो नहीं, इसको अगर देखोगे तो ये sp3 होता है, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आती है वो D8+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आती है, जो बेसिकली किस में जाता है बेटा, आपका D8 आएगा, नहीं सॉरी D10 बनता है, ये D10 बन जाता है। सॉरी, इसको आप ना ऐसे लिखो तो ज़्यादा समझ आएगा, 4s2 3D8, ठीक है। फिर इसमें आप SFL डालते हो, sp3 आ जाता है। यहाँ पे होता है 3D8 और 3D8 में आप SFL डाल रहे हो तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो DSP2 आ जाएगी, ठीक है, DSP2 आ जाएगी। यहाँ पे कोबाल्ट 3+ में है, ठीक है। तो कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में कितने 27 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 3D7 4s2 हो जाएगा। आप इसमें 3CO+3 बना रहे हो तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 3D6 आ जाएगा, ठीक है। अब 3D6 आ जाएगा तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 3D6 में अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डालोगे तो ये इसको पेयर कर देगा, और पेयर कर देगा तो ये D2sp3 बना देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पेयरिंग नहीं कर पाए, जैसे यहाँ पर केस है कि ये 3D6 है और यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, आप WFL का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको हो जाएगा sp3d2, ठीक है, उस केस में आपको हो जाएगा sp3d2। सो दिस विल बी द योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर, डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म द ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन बिकॉज। देखो बहुत सिंपल है, जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये एयर में प्रेजेंट तो रहते हैं, बट इनकी रिएक्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसको यहाँ पे N2OX ऑक्साइड बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारा हीट सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। एंड वो भी जब ये रिएक्शन होती है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे होती है, ऊपर से आपको क्या करना पड़ता है बेटा, हीट सप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ेगी, और दूसरी बात हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो दोनों ही चीजें फेवरेबल नहीं है, ठीक है, दोनों ही चीजें फेवरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। तो अब देख लेते हैं इनमें से सही आंसर कौन सा है। N2 इज अनरिएक्टिव इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाँ ये भी सही है, बट
कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, नहीं स्टेबल तो होते हैं वो, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन देम कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, विदाउट कैटलिस्ट भी हाई टेम्परेचर पे होता है। द रिएक्शंस इन इस एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, डी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन दी गई है, सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, जो H+ है उस पर ये जाकर अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करेगा तो ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, ठीक है। कुछ इस प्रकार का सिनारियो बनेगा और ये यहां से लीव कर जाएगा। जब ये लीव कर जाएगा तो एक कार्बोकेटायन जनरेट कर देगा, ठीक है। देखो कैसा कार्बोकेटायन जनरेट कर रहा है, ठीक है। इट विल जनरेट अ कार्बोकेटायन, ठीक है। यहां पर एक कार्बोकेटायन जनरेट कर देगा और यहां पर होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है और वो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये वाली जो वो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेसिकली इस पे जाके अटैक कर देगा। जब ये अटैक करेगा तो आपको एक 5 मेंबर की रिंग मिलेगी, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग मिलेगी और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप अगर नंबरिंग करोगे तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4, इसको 5, ठीक है। तो 5 से अटैच जो ग्रुप्स होंगे 2 ऐसे होंगे और इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से 5 से अटैच है ना ये वाला कार्बन, जो छठा कार्बन है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और 1 पे 2 ऐसे लगे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, सेकंड स्टेप में Br जोड़ना है, ठीक है। तो Br माइनस आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो Br माइनस जैसे ही जोड़ोगे आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा कि यहाँ पर आपके पास तो ब्रोमीन होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो विच विल बी द करेक्ट आंसर, देख लो इसमें से सी लग रहा है मुझे, सी इज विल बी द करेक्ट आंसर, हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन, ठीक है। तो कंपाउंड चलो अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो पैराजाइलिन है, ठीक है। पहला वाला जो है वो पैराजाइलिन है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे कि पैराजाइलिन है, ठीक है ना, ठीक है। तो CH3 लगा हुआ है, एक CH3 इधर भी लगा होगा, ठीक है, पैराजाइलिन लगा हुआ है, ठीक है। फिर है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन तो कुछ इस प्रकार का होगा कि यहाँ पर Br लगा होगा, ठीक है। फिर मेसिटिलीन है, मेसिटिलीन में तो ऐसा होता है, ठीक है। मेसिटिलीन में इस तरीके की CH3 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 होगा, ठीक है। फिर नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है एक्चुअली, अब देखोगे यहाँ पर जो है वो NO2 हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन की बात करोगे नॉर्मल बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, हाईली डीएक्टिवेटिंग, ये माइल्ड डीएक्टिवेटिंग, ये हाईली एक्टिवेटेड है, ठीक है, ये हाईली एक्टिवेटेड है, ठीक है। जाइलिन था ना एक, पैराजाइलिन था एक, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आप देख लो जहाँ पे एक्टिवेटिंग है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, मैक्सिमम यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पे, फिर इसका आएगा, ठीक है, फिर ये माइल्ड वाला और ये हाईली डीएक्टिवेटिंग होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, नाइट्रेशन का चेक करना है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, आपको बस ये देखना है कि रिंग कहाँ पे एक्टिवेटेड है। मोर द रिंग विल बी एक्टिवेटेड, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से करना है क्वेश्चन, और इसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। कंपाउंड, ये अच्छा क्वेश्चन था। द कंपाउंड इज हीटेड विद द कंसंट्रेटेड HI टू गिव द हाइड्रोक्सी कंपाउंड A which further heated with the zinc dust to give the following compound B, ठीक है। देखो अब करना क्या है, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये इधर क्या है बेटा, रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस की वजह से इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड यहाँ से नहीं तोड़ा जा सकता, मजबूरी बॉन्ड यहाँ से तोड़ा जाएगा, और मजबूरन अगर बॉन्ड यहाँ से तोड़ा जाएगा तो H इस साइड जाएगा, I इस साइड आएगा, ठीक है। H जो है हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट देखोगे A जो बात की जा रही है, तो A जो है हाइड्रोक्सी कंपाउंड वो एक्चुअली कुछ नहीं है, फेनॉल है, ठीक है, वो बेसिकली फेनॉल है। अब फेनॉल का आपने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, रिडक्शन, ठीक है। तो फेनॉल का रिडक्शन कर दिया तो आपको B जो मिलेगा वो बेंजीन मिल जाएगा। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि अगर आपको कभी भी फेनॉल से बेंजीन बनाना है तो आप जिंक डस्ट से रिएक्शन करा देते हो, ठीक है। तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट आ जाएंगे जो ऑप्शन नंबर D से मैच कर जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असेसन है और एक रीजन है, देखते हैं। असेसन कह रहा है कि एनिलीन ऑन नाइट्रेशन इल्ड्स ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, बिल्कुल सही है। मैं बताता हूं इस क्वेश्चन की बहुत प्यारा सा रीजन भी है, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। होता क्या है एक्चुअली कि जब आप इसका नाइट्रेशन करने ले जाते हो ना, ठीक है, जब आप इसका नाइट्रेशन करते हो तो आप क्या यूज करते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करते हो, ठीक है, और कई बार आप कंसंट्रेटेड H2SO4 भी इवन यूज कर लेते हो इसमें, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब ये जो है ना ये बेसिक है, तो ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है। जब ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो एक जो प्रोडक्ट मिलता है वो NH3 पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है।
और जो ये NH3 पॉजिटिव मिला ना, दिस इज बेसिकली क्या है बेटा, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं उनके केस में रिएक्शन कहाँ पे होती है, अरे कहाँ पे होती है रिएक्शन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, उनके केस में रिएक्शन कहाँ पे होती है, रिएक्शन होती है मेटा पोजीशन पे, ठीक है, रिएक्शन कहाँ पे होती है बेटा, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ से मेटा मिलता है और यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है, यहाँ से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है बेटा, ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो यहाँ से मेटा आ गया और यहाँ से हमें मिलता है ऑर्थो और पैरा, ठीक है। तो दिस इज द हाउ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जो तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर, बिल्कुल सही है, ये स्ट्रॉन्ग वो होता है एसिडिक मिक्सचर, इसकी वजह से एनिलीनियम आयन बन जाता है और इस वजह से प्रोडक्ट उधर चला जाता है, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं इसमें, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पॉलीमर्स दिए गए हैं और इनको आपको मैच कराना है लिस्ट 2 उनके नेचर से, ठीक है। तो पहला वाला जो दिया गया है ये तो एक्चुअली क्या है, ये आप देख सकते हो, ये क्लोरोप्रीन यानी नियोप्रीन है, ठीक है। तो ये नियोप्रीन है, ठीक है, तो नियोप्रीन बना रहा है, तो ये प्लास्टिक जैसा कुछ बनाता है, ठीक है, रबर है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये सिंथेटिक रबर है और कुछ नहीं है, नेचुरल रबर नहीं है, ये सिंथेटिक रबर है, ठीक है, सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं बेटा, एलास्टोमर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये एलास्टोमर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, पहला वाला। दूसरा जो है ये बेसिकली नाइलॉन 6 है, ठीक है। अब देख लो इधर भी 6 कार्बन है और इधर भी 6 कार्बन है, ठीक है। तो ये नाइलॉन 6 है जो फाइबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। किस कैटेगरी में आता है बेटा, फाइबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसको अगर देखोगे ये विनाइल क्लोराइड से बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC है जो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, ठीक है, जिसको आप हीट वीट भी कर सकते हो। ये पाइप बनाने के काम लिया जाता है, ठीक है। तो पाइप वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है, ये थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। लास्ट वाला नोवोलैक है, नोवोलैक यानी जो बर्तनों के हैंडल बनाने में यूज किया जाता है और ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और ये थर्मोसेटिंग होता है, ठीक है। इसको आप दोबारा बेसिकली एक बार सेट हो गया तो आप हीट करके फिर इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। तो ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे, मैच करा लीजिएगा, ठीक है। Going to the next question, enzyme of an action of an enzyme can be blocked only when an inhibitor blocks active site। नहीं, एंजाइम दो तरीके के होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंजाइम होते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटिव होता है ना, ये तो बेसिकली एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है, ठीक है, ये आपका एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है। बट जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं ये बेसिकली किसी और साइट को ब्लॉक करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं एलोस्ट्रेकिक साइट्स, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एलोस्ट्रेकिक साइट्स, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्टिव साइट्स को ही ब्लॉक करे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इनहिबिटर इनहिबिटर कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम। तो ये ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा बॉन्ड बनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड डी हो जाएगा, फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। बिल्कुल सही है, वो एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा पतला सा लेयर होती है जिसके ऊपर ये धीरे धीरे एडजॉर्ब होते हैं पार्टिकल्स और ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। A thin layer is a silica gel spread over a glass plate of a suitable size in a thin layer chromatography which act as an adsorbent। ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यही तो प्रिंसिपल है, सिलिका जेल में धीरे धीरे एडजॉर्ब होकर प्लेट के ऊपर चढ़ता जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, फ्रक्टोज का रिएक्शन कराना है, अच्छा, और ये रिडक्शन कराना है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या करता है, आप कोई भी बॉन्ड ले लो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, रेड फॉस्फोरस है चाहिए, उसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है किसमें बेटा, एल्केन में, ठीक है। तो जो फ्रक्टोज होता है वो C6H12O6 ही होता है, तो ग्लूकोज वाली ही रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा C6H14, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली आपको पता चल गया। इस वाले रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH2OH, फ्रक्टोज के अगर हम यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CHOH होल थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। आप इसकी रिएक्शन क्या करो, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपको HCN से कराना, हाँ। तो साइनोहाइड्रिन बनेगा पहले स्टेप में, ये जाकर यहाँ पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ओपन कर देगा, ठीक है। तो सो प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज बेसिकली CH2OH, यहाँ पर आ जाएगा C बॉन्ड OH और इधर आपका आ जाएगा CN, ठीक है, और इधर आपका क्या आ जाएगा बेटा, CHOH का होल थ्राइस आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा CH2OH, ठीक है। अब इसको आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो सेकेंड स्टेप में, ठीक है, H3O+ की प्रेजेंस में, तो इसको हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी CH2OH बॉन्ड C, इधर आ जाएगा COOH, ठीक है, इधर आपका आ जाएगा OH, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास,
फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा CH होल थ्राइस, ठीक है, OH का होल थ्राइस, और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये आपके प्रोडक्ट आ जाएगा जिसमें आपको 2 ऑक्सीजन का इंक्रीज देखने को मिल रहा है और एक कार्बन का, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एक कार्बन का इंक्रीज किस में है, ये है, ठीक है। तो ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। देख लेना इसमें या इसमें से कोई एक मैच करेगा, ठीक है। फॉर्मूला तो अब लिख ही दिया यार, अब उसमें कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। चलो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक सवाल है जिसमें I2 है और NaSCO3 है, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक है तो इससे तो रिएक्ट कर लेगा बेस से, क्योंकि ये बेस है, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होगी, तो ये इस पर अटैक करेगा, वो उस पर अटैक करेगा। तो जो आपको यहाँ पर पहले स्टेप में देखने को मिलेगा ना, वो कंपाउंड कुछ इस प्रकार का होगा कि इधर आपका आयोडीन आके जुड़ेगा, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जनरेट करेगा एक्चुअली, ठीक है। और इधर आपके पास कुछ इस प्रकार की जगह होगी, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे OH था ना, ठीक है, तो डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा O-, ठीक है, O- और Na+, ठीक है। फिर ये जो पोजीशन है ये बेसिकली क्या कर सकता है, ये देखो, ये तो री अटैक भी कर सकता है ना, बिल्कुल यहाँ पे आके वो री अटैक कर देगा, ठीक है। तो और इसको ओपन करा देगा, ठीक है। तो ये ओपन कराएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इस तरीके से, एक तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आयोडीन इससे लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा, देखो कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 हो गया, ये आपका 1, ये आपका नहीं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और इस थर्ड वाले कार्बन के डबल बॉन्ड O भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन है जो बेसिकली इससे बॉन्ड बना रहा है इस तरीके का, ठीक है, ये आ गया। तो अब इसके बाद कुछ किया गया क्या, अच्छा सेकेंड स्टेप में और भी है, pyridine और हीट। तो जैसे ही आप pyridine और हीट लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एलिमिनेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कराओ, ठीक है, और जैसे ही एलिमिनेशन कराओगे, ठीक है, और एलिमिनेशन में ध्यान देना pyridine लिया गया है, ठीक है ना। तो pyridine लिया गया तो ये हो जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर आपका O, यहाँ से एलिमिनेशन होगा, तो ये कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द योर एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर C में है, ठीक है। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों का इसमें ये डाउट होता है कि सर ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला। याद रखना pyridine लिया हुआ है, तो pyridine के केस में जो एलिमिनेशन होता है उसमें हॉफमैन एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो हॉफमैन्स में जाना है आपको, ठीक है ना, डोंट गो फॉर द सेडजेफ एल्कीन। अगर सेडजेफ में चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आप इंटीजर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगर देखोगे, 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 is reacted with 2 liter 0.1 molar NaOH solution. The molarity of the resulting product Na2SO4 इन द सोल्यूशन, ठीक है। देखो तो हो क्या रहा है, आपने एक रिएक्शन कराई है H2SO4 की along with the NaOH, ठीक है। तो जब आप रिएक्शन हो रही है तो बेसिकली क्या बन रहा है बेटा, आपको Na2SO4 मिल रहा है और साथ में आपको वाटर मिल रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसके मोल्स अगर देखोगे तो 2 लीटर इंटू दिस यानी 0.4 मोल्स हैं, इसके अगर मोल्स देखोगे तो आपको 0.1 मोल मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ हो रही है ना, और रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है ना, हाँ बैलेंस नहीं है, सॉरी, ये अब बैलेंस्ड है रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस्ड है क्या, हाँ बैलेंस्ड होगा, 2 मोल वाटर निकलेगा बस, हाँ ठीक है, अब बैलेंस्ड है रिएक्शन। अब देखो द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो 4 लीटर हो गया है, ठीक है। वॉल्यूम ध्यान रखना, अब नया वॉल्यूम 4 लीटर हो गया। अब ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो 0.1 से कितना बना होगा बेटा, ये 0.1/2 बना होगा, तो यानी जो मोल्स हैं वो 0.05 है, ठीक है। और आपको वॉल्यूम 4 लीटर है, ठीक है, तो निकाल लो बस ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 0.05 अपॉन बेसिकली 4, ठीक है। मिली मोलर पूछा गया, ठीक है। तो मिली मोलर है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 की पावर 3 से, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। 125 ऐसा कुछ आ रहा होगा, देख लेना। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेटल M क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस, ठीक है, विद एन एज लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, एज लेंथ भी दिया गया है। द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल आपको निकालना है, ठीक है। Na की वैल्यू दी गई है और डेंसिटी दिया गया है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलर मास अपॉन Na इंटू A³, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। Z की वैल्यू FCC है तो 4 हो गया, मोलर मास आपको निकालना है, Na क्वेश्चन में गिवन है 10 टू द पावर 23,
ए क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, ठीक है। डेंसिटी भी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी है बेटा 9.03, ठीक है। सो दिस इज द, इसको सॉल्व कर लेना, एम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा सवाल था। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम एन हाइड्रोजन एटम इज दिस, देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट कंपेयर टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द एटम। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, जो ई रिक्वायर्ड होता है, जो ई का आपको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो क्या होती है? वो होती है बेसिकली -13.6 इंटू, ठीक है, जो आपको एक मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, ठीक है। तो वो -13.6 इंटू उसका जो भी चार्ज है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी आपको मिनिमम खर्च करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। ये एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी आपको मिनिमम खर्च करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने वेवलेंथ दिया हुआ है आपको, तो वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उसको हम लोग लिख सकते हैं h/√2mk, ठीक है। यहाँ से k निकल जाएगा, तो k की जो वैल्यू आ रही है, अगर यहाँ से देखा जाए तो k की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, k इज इक्वल्स टू h², ठीक है, λ²/2m, ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास k आ जाएगा। जब k आ जाएगा तो आप क्या करोगे, जो E आपको चाहिए सिस्टम के लिए, ठीक है, जो E आपको चाहिए वो बेसिकली क्या होगा, E एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू E जो रिक्वायर्ड है प्लस जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जा रही होगी, ठीक है। क्योंकि दो पार्ट होते हैं ना एनर्जी के, एक जो उसको थ्रेशोल्ड कहते हैं हम लोग, और एक जो बेसिकली क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। K उठा के यहाँ से यहाँ रख देना। उससे पहले एक छोटा सा काम कर लो, क्योंकि आपको रेशियो पूछा गया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन कंपेयर्ड टू, ठीक है, तो यानी रेशियो है एक तरीके का। तो ये ई रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख लो, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस ई रिक्वायर्ड से डिवाइड कर दिया k/E रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है, k यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना, ई रिक्वायर्ड ये रहा, सब्सटीट्यूट एंड गेट, ठीक है। तो इसको सब्सटीट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस A एंड B, ठीक है, गैसियस मिक्सचर है, अंडर ए टोटल प्रेशर ऑफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद द आइडियल लिक्विड सोल्यूशन। एक आइडियल लिक्विड सोल्यूशन है जिसमें बेसिकली दो कंपोनेंट है A और B, ठीक है। और जो टोटल वेपर प्रेशर है यहाँ पे, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल जिसे हम कहते हैं, या PT भी आप लोग कई किताबों में लिखा हुआ देखेंगे, वो बेसिकली आपको कितना दिया गया बेटा 0.8 ATM दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन इक्विलिब्रियम विद एन आइडियल सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस A इज 0.5, यानी YA की वैल्यू मुझे पता है 0.5 है, तो YB तो ऐसे भी पता चल गया ना, YB भी 0.5 हो गया, ठीक है। एंड लिक्विड में भी इसका दिया हुआ है, सॉरी, तो XA भी मुझे पता है 0.2 है, और XB भी पता है मुझे 0.8 है, ठीक है। दो ही कंपोनेंट हैं क्वेश्चन में, बाइनरी बोल दिया है कहीं पे, ठीक है, दो ही दिया गया, टू सब्सटेंसेस। अब क्वेश्चन क्या है, द वेपर फेज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए, यानी हमें PA0 निकालना है एक्चुअली, PA0, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर एग्जर्ट प्रेशर कर रहे होंगे, तो इसको इक्वली डिवाइड कर दें, तो इसमें जो आएगा तो PA जो होगा वो 0.4 ATM हो जाएगा, और वो भी किसके बराबर होगा बेटा, PB के बराबर। अब अगर आपको PA पता है तो आप PA कैसे लिखते हो, PA इज इक्वल्स टू कैसे लिखा जाता है, XA इंटू PA0, ठीक है। PA आपको 0.4 दिया गया है क्वेश्चन में, XA आपको कितना है बेटा क्वेश्चन में 0.2 दिया गया है, तो यहाँ से PA0 डायरेक्टली 2 आ जा रहा है ना, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द 2। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 600 Kelvin 2 moles ऑफ NO आर मिक्सड विथ 1 moles ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके 2 मोल लिए गए हैं, इसके 1 लिया गया है, ठीक है, are mixed, the reaction occurs as above, comes to the equilibrium under a total pressure of 1 ATM, ठीक है। टोटल प्रेशर जो है P total वो क्वेश्चन में गिवन है वो 1 है, ठीक है। The analysis of the system shows that 0.6 mole of oxygen are present at equilibrium, ठीक है। तो अगर हम फाइनल रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आफ्टर रिएक्शन, तो ये कितना हो गया होगा, 2 - 2x होगा, ये 1 - x होगा, ठीक है। और अगर यहाँ से x गया तो ये 2x बना होगा, ठीक है। तो देखो 1 - x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कह रहा है कि 1 - x ना 0.6 मिल गया, तो x यहाँ से कितना आ रहा है 0.4 आ गया, सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये बेसिकली ये क्वांटिटी जो है ये 1.2 बन के आ जा रही है, ये क्वांटिटी आपके बन के आ रही है 0.8 आ जा रही है, ठीक है। और ये क्वांटिटी आपको पता ही है 0.6 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, KP में निकाल लेते हैं, KP निकाल लो, ठीक है।
तो Kp विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो क्योंकि टोटल प्रेशर जो है ना वो अन्य ATM ले लिया गया है, तो अब जो पार्शियल प्रेशर्स निकाल लो सबका, तो पार्शियल प्रेशर है NO2 गैस का, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल मोल्स, टोटल कितने हैं, सम करो इसको तो 2.6 इंटू 1 आ जाएगा, तो 1 का तो मतलब है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे रख दो सबका पार्शियल प्रेशर, तो NO का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 0.8 अपॉन 2.6 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अगर आप यहाँ से Kp की इक्वेशन देख लो एक बार, ठीक है, इसका स्क्वायर आएगा, पावर 1 आएगी, पावर 2 आएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1 और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO की पावर 2, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो आपको Kp जो बन जाएगा, इनको देख देख के लिख सकते हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.6 अपॉन 2.6 टू द पावर 1 और ये हो जाएगा 1.2 अपॉन 2.6 टू द पावर 2, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, Kp आ जाएगा, ठीक है, तो आप निकाल लेना, Kp जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ दिस मच ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन एनालाइज्ड बाय द डुमास मेथड यील्ड दिस मच ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन निकला है वो 22.78 ml आया है, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर द KOH सोल्यूशन एट 280 केल्विन इज दिस, ठीक है, तो बेसिकली इतना प्रेशर भी है उसका गैस का, ठीक है, द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन, दो डेटा भी दिए गए हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट दिस इज दिस, ठीक है, यानी देखो अब अगर तुम P ऑफ ड्राई गैस यानी N2 निकालोगे, ठीक है, P ऑफ ड्राई गैस जो होगा वो क्या होगा, P ऑफ द गैस प्लस अगर आप यहाँ पे निकालते हो, ठीक है, देखो ये P ऑफ द मतलब ऐसे नहीं एग्जैक्टली, इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे में कंफ्यूजन होगा, एक सेकेंड, लेट अस रिमूव दिस, ठीक है, ड्राई गैस के टर्म्स में नहीं समझो, ऐसे समझो कि जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा ना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको ड्राई गैस में, ये जो टोटल प्रेशर होगा, मान लो एक गैस है, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें होंगी ना, एक तो नाइट्रोजन होगा और एक क्या होगा बेटा, यहाँ पे वाटर का प्रेशर होगा, तो इसका जो टोटल प्रेशर आप देख रहे होगे वो दो चीज़ों का प्रेशर होगा, ठीक है, P टोटल विल बी इक्वल्स टू P ड्यू टू नाइट्रोजन प्लस P ड्यू टू द एक्वस टेंशन दैट इज वाटर, ठीक है, ये होगा, तो ये चीज़ आपको 759 दी गई है क्वेश्चन में, और ये जो चीज़ है ना H2 वाला कहाँ गया, ये रहा, ये आपको 14.2 दिया गया, तो यहाँ से आप प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लोगे, तो जो आपका PN2 आ रहा होगा, ठीक है, वो आ रहा है बेसिकली 759 माइनस दिस, ठीक है, तो घटा दो, देख लो 744.8, ठीक है, 744.8 आ रहा है, इसको ATM में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये mm ऑफ Hg में है, ठीक है, ये mm ऑफ Hg में है, तो P ऑफ N2 अगर देखा जाए तो ये 744.8 डिवाइडेड बाई 760 हो जाएगा, ये आपका प्रेशर आ गया, ठीक है, ATM में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जो भी चीज़ें चल रही हैं सब सही है, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, तो अब हमें क्या करना है, इसके मोल्स कैलकुलेट करने, क्योंकि मोल्स कैलकुलेट करोगे तभी तो मास कैलकुलेट होगा, तो मोल्स N विल बी इक्वल्स टू बेसिकली PV बाई RT हो जाएगा, ठीक है, तो P कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 744.8 अपॉन 760 हो जाएगा, ठीक है, इंटू आपका V आ जाएगा, V वॉल्यूम कहाँ है, वॉल्यूम 22.78 इंटू 1000 या 10 टू द पावर -3 ml में है ना, ठीक है, तो ये रख दिया। R की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है 8.2 है, और टेम्परेचर की वैल्यू क्या क्वेश्चन में गिवन है 280, ठीक है, यहाँ से N आ जाएगा, मोल्स आ गए तो मास निकाल सकते हो, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बेटा 14 इंटू, ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस है नहीं है, N2 गैस है ना, क्या है, इट्स नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो 28 हो जाएगा, सॉरी, तो मास हो जाएगा 28 इंटू एन, अब 28 इंटू एन आ गया, अब परसेंटेज नाइट्रोजन आपसे पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे लिखोगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल, टोटल कितना है 0.125 इंटू 100, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यही आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि ऑन रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KiO4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस टू एवोल्यूशन ऑफ O2, ठीक है, तो KiO4 की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर, ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो वो क्या करता है कि इसको ना कन्वर्ट कर देता है आयोडेट आयन में, ठीक है, या आप कह सकते हो कि आयोडिक
एसिड में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से along with the release of oxygen, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, आयोडीन में कहाँ से कहाँ का चेंज होता है, तो +7 से ये +5 में चला जाता है, ठीक है, तो 5 का चेंज आता है, ठीक है, चेंजेस टू +5, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन गिवन बिलो इज द ग्राफ बिटवीन ln k एंड दिस, ठीक है, आपको पता होगा अगर आप अरेनियस इक्वेशन देखते हो तो k इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, k बेसिकली जो होता है वो हमारा होता है a डॉट ई टू द पावर माइनस EA/RT, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं, हाँ इसी की जरूरत है, ln ले लो तो ये ln k इज इक्वल टू ln a आ जाता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाता है माइनस EA/RT बनकर आ जाता है, ठीक है, यानी जो स्लोप है ना वो माइनस EA/R के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू dy/dx, ठीक है, तो यानी y एक्सिस में जो चेंज है, ठीक है, स्लोप तो 20 अपॉन जो x एक्सिस में चेंज है 5, तो ये 4 के बराबर आ रहा है, तो 4 विल बी इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा EA/R के बराबर, ठीक है। तो R की वैल्यू 2 दी गई है क्वेश्चन में, तो EA की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 4 × 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा आंसर, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कर्व नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेंडलीज आइसोथर्म, ठीक है। फ्रेंडलीज आइसोथर्म कैसे देता है, फ्रेंडलीज आइसोथर्म कहता है कि x/m जो होगा ना वो Kp⁴ होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको लॉग ले लो, क्योंकि सारे जो ग्राफ दिए गए हैं वो लॉग में है, ठीक है एक्चुअली, तो आप अगर लॉग ले लो तो ये बन जाएगा log ऑफ x/m, ठीक है, और ये आ जाएगा बेसिकली log ऑफ k प्लस 1/n log ऑफ p, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बनकर आ जाएगी। तो यानी ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर कंपेयर करूं इसको y एक्सिस पे और इसको कंपेयर करूं mx से, तो ये हमारा इंटरसेप्ट वैल्यू होगी, ठीक है, ये हमारी इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही ग्राफ सही है, वो ये वाला, ठीक है, बाकी तीनों ग्राफ जो हैं वो गलत हैं। प्रेशर के अगेंस्ट ऐसा ग्राफ नहीं आता, लॉग पी के अगेंस्ट ऐसा ग्राफ नहीं आता, स्ट्रेट लाइन आता है, और x/p और इसके में भी ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। तो कितने ग्राफ नॉट इन अकॉर्डेंस हैं, तो 3 ऐसे हैं जो नॉट इन अकॉर्डेंस हैं, तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, याद रखना 2 ही पाथ वेरिएबल हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, सिर्फ 2 ही पाथ वेरिएबल हैं आपके सिलेबस में और वही आपको याद रखना है, ठीक है। और वो पाथ वेरिएबल क्या है बेटा, पहला पाथ वेरिएबल है हीट और दूसरा है वर्क डन, ठीक है, एक तो हीट है और दूसरा जो है वो है वर्क डन, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है कि हीट और वर्क डन को छोड़ के बाकी सब स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया, ये पाथ हो गया और ये स्टेट हो गया, ठीक है। तो 3 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। यही पूछा ना स्टेट वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री के पेपर का डिस्कशन, जिसमें मैंने आपको आज जो भी 28 जुलाई को पेपर हुआ था इवनिंग सेशन में, उसके सारे जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके आगे अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में या हमारी ऐप पे भी जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर केमिस्ट्री पोर्शन। Yeah, dear students, everybody, yeah, we have been discussing the solutions of JEE main paper dated 28th, let me take, yeah, 28/7/2022, that is July attempt 28th dated evening shift paper we are going to discuss. And so math part we are going to do, already physics and chemistry parts are done, right? Yeah, dear students, you see this question, S is set of all real numbers from -6 to -3 satisfying this particular inequation, and second T is set of all integers satisfying this simple quadratic inequation. Of course, mod x is given. He wants S intersection T, that means the common elements in S and T. It's a simple question, dear friends, because rather this is a simple one. Let us, he said that to x belongs to integer, just find the integers which satisfy this particular inequation. Then you can substitute and verify here, my dear friends. How to solve this? You can take it as mod x square minus 7 mod x plus 9 less than or equal to 0. So mod x must belong to, you find the roots,
minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a, that is 7 plus or minus you can say root 13 by 2. Am I correct? Root 13 is approximately you can say 3 point something, 3.5. Suppose 3.5 means 10.5, it will be around 5. One root is around 5 and other root is 7 minus 3.5, which is 3.5 by 2, which is I can say 1.7 around. So mod x must belong to this particular interval. That means you see mod x belongs to around 1.7 and 5, you can say closed interval approx. So you can also take x belongs to closed. Actually you have to take these numbers, my dear friends. 7 plus root 13 by 2, 7 minus root 13 by 2, precisely writing x belongs to 7 minus root 13 by 2 to 7 plus root 13 by 2 closed interval, as well as x belongs to minus of this minus 7 minus root 13 by 2 to minus 7 plus root 13 by 2. So these intervals you need to take approximate values and you have to see which integers lie in this interval. Better you substitute these intervals in the second equation, you just take the one which satisfy these. You can find this is minus 5, minus 4, 3. These are the numbers which satisfy both the inequalities. You can go with option D, my dear friends, the number of elements in S intersection T, right. Next, my dear friends, second one, this is a quadratic equation whose roots are alpha comma beta. He said 1 by alpha square plus 1, 1 by beta square plus 1 are the roots of this particular quadratic equation. So I need to comment the roots of this particular equation, real and negative, real and positive kind of, my dear friends. One thing you can say here, minus a is going to be 1 by alpha square plus 1 plus 1 by beta square plus 1, and you can say b is equal to the product of the roots, that is 1 by alpha square plus 1 plus 1 by beta square plus 1, product gives 1 by alpha square plus 1 by beta square, you can say plus 1 by alpha beta whole square plus 1. Now my dear friend, this is minus here, right. So plus a in the sense minus, 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 minus. Now you just find a plus b, my dear friends. These two get cancelled, these two get cancelled, minus 1 plus 1 gets cancelled, you will get 1 by alpha beta whole square, minus 1 will be there. From this equation, alpha beta is going to be root 6, that is 1 by 6 minus 1, that is minus 5 by 6, my dear friends. Once you know a plus b value, my dear friends, you can find a plus b minus 2 can be written here, a plus b plus 2 can be written here easily. A plus b plus 2 means this is 7 by 6, right. A plus b minus 2 means minus 17 by 6. So you will get x square plus 17, 6x square plus 17x plus 7 equal to 0 is the quadratic equation given. You just find delta. You see delta will be positive, real and distinct. Sum of the roots negative, product of the roots positive, means both the roots must be negative, my dear friends. Real and both roots negative is the right answer. Okay. Next, my dear friends, A, B, any two 3 by 3 symmetric and skew symmetric matrices respectively. That means A transpose is A, B transpose is minus B, my dear friends. Now which of the following is not true? For example, you want to check whether this matrix is symmetric or not, you take it as C. C is A power 4 minus B power 4. Consider C transpose. A plus B whole transpose, you can write this minus B power 4 whole transpose. You can write this is A transpose power 4 minus B transpose power 4. We know that this is A power 4, this is minus B power 4. Since it is even, this is B power 4 you will get, which is C. So this is symmetric, my dear friends. Whereas the same thing if you take C option here, minus B power 5 will be minus B power 5 minus A power 5, skew symmetric matrix you will not get. So wrong one is very clear.
from option A you can imply that this is going to be wrong. You can also verify B, D will be correct, C is the only wrong option, so C is the correct answer. Next my dear friends, you see this question, f of x is ax square plus bx plus c such that f of 1 is 3 gives an equation a plus b plus c is equal to 3. F of minus 2 is lambda, that is 4a minus 2b plus c is equal to lambda, and f of 3 is 4, which is my dear friends 9a plus 3b plus c is equal to 4. 3 equations in 3 variables, of course lambda is the unknown. Now to find lambda, he has given one more condition here, you will get in terms of lambda. From this lambda can be replaced here in terms of ABC, you will get 3 equations in 3 variables, you can solve it, you can find the value of lambda my dear friends, you can get the value of lambda to be 4, that is it, simple equations you can solve. Next, this function defined by limit n tends to infinity this. You see my dear friends, here he didn't mention about x. So you can break this definition like, suppose friends mod x less than 1. If mod x less than 1, you see as x n tends to infinity, this becomes 0, this becomes 0, this becomes 0, you will get cos 2 pi x is the value. Whereas if x is equal to 1, if you take my dear friends, this is going to be 0, this is got cancelled, cos 2 pi which is 1. If x is minus 1, you will get cos 2 pi is going to be cos 0 is 1, I can say this is 1, this is minus 1 in the sense this is minus sine of minus 2 means plus sine of 2 by this is minus 1, so you can say these two got cancelled, this is minus 1, so minus of this you will get. And what if mod x value is greater than 1? If mod x greater than 1, you can divide the numerator and denominator with x power 2n, so that this can be 0 minus of sine of x minus 1 by, you can write this becomes 1 by x power 2n becomes 0, here x will be left, x minus will be left my dear friends. Now he is asking about what about the function is continuity, he is asking about the continuity of this particular function my dear friends. So he is asking, actually some part of the question is missing, is continuous at he is asking about. So my dear friends, at 1 and minus 1 you can observe that this is continuous function, right side of 1 the limit is going to be, you see the limit is going to be minus 1, left side of 1 cos 2 pi is cos 0 which is 1. So at minus 1 as well as at 1 also you can observe it is discontinuous, because left hand limit is different from right hand limit, and hence my dear friends except minus 1 and 1 it is continuous everywhere. Okay, fine. Next, you see this function x into e power x into 1 minus x, increasing decreasing nature, you need to take the derivative my dear friends. This is x into e power x minus x square, let it be f of x my dear friends. So f dash x is going to be u into derivative of v x minus x square into 1 minus 2x plus v into derivative of u, which is my dear friends e power x minus x square into x minus 2x square minus 1 is plus 1 will be there. This is the function my dear friends. This is always going to be positive. What about this expression? You can write minus e power x minus x square into 2x square minus x minus 1 my dear friends. Clearly x is equal to 1 is a root here into 2x plus 1. So the derivative becomes 0 at minus 1 by 2 and 1. You see minus 1 by 2 and 1. If x is more than 1, positive, 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 here negative, you can say if x is between here alternately plus minus comes. So increasing minus 1 by 2 to 1 will be
the right answer, my dear friends. This is going to be increasing in this interval. Okay, right. The next, my dear friends, you can go the sum of the absolute maximum and absolute minimum values of this particular function, tan inverse of sin x minus cos x. Array, you just take the derivative f dash x 1 by 1 plus x square, that is sin x minus cos x whole square, into sin x derivative is cos x minus cos x derivative is minus sin x. You see, this is f dash x. Undoubtedly f dash x will be 0 only when sin x plus cos x is 0. You can say x is in the interval 0 to pi is 3 pi by 4, my dear friends. That means it is going to have one of the extremum at 3 pi by 4. So, to find the maximum and absolute minimum, that means at extremes you need to find function value at 0, function value at 3 pi by 4, function value at x is equal to pi. You just substitute, my dear friends. If you put x is 0, cos 0 is 1, tan inverse minus 1 is minus pi by 4. At 3 pi by 4, my dear friends, sin inverse is, you can say 1 by root 2 plus 1 by root 2. This is tan inverse root 2 you will get, tan inverse root 2, and at pi sin 180 is 0, this is 1, tan inverse 1 is pi by 4. Undoubtedly, my dear friends, this is the least value. Greatest value means tan inverse 1 is pi by 4, root 2 is more than 1, tan increasing function, this is the greatest value. Now he is asking the sum of absolute maximum and absolute minimum means tan inverse root 2 minus pi by 4 you have to write, but the answer, it cannot be first option, it cannot be second option. Cos inverse you try to convert, you can write, which is cos inverse of, you see, 1 by 3, you see, under root minus pi by 4, correct. So, option C is the right answer. Okay. Next, you see this question, x of t is given, x in terms of t is given, y in terms of t is given, where t is in first quadrant. Then you just need to find 1 plus y dash square by y double dash at x is t is equal to pi by 4. You know, my dear friends, in parametric differentiation, second derivative is important. Simply you find dy by dx like dy by dt by dx by dt. Fine. You need to find these two and find this expression first. Then if you want to d square y by dx square, you will get this in terms of t, its derivative into dt by dx you will get, that is reverse of this. After finding this, now you put x is pi by 4 here, pi by 4 here, and simplify here. This is the working that you need to do, my dear friends. In this particular problem you are going to get the answer to be, yeah, minus 2 by 3. Simplification, that's very routine and regular question. Next, you see, this is the question you got, in, this is reduction formula related, in is integral 0 to x, you see, in is given like integral 0 to x 1 by t square plus 5 whole power n dt. Now you just take into 1 you take and apply by parts, that is f of x into, that is 1 by t square plus 5 whole power n into integral g of x, that is t, between the limits 0 to, I can say, x minus integral f dash x, that is minus n into t square plus 5 power minus n minus 1 into 2t, this integral is t dt. Right, my dear friends, you will get here, see, x by, you see, this is, if you put x by x square plus 5 whole power n minus, this is 0, minus of minus plus 2n into integral 0 to x, you can write 2, you can take 2 t square by, you can write t square plus 5 whole power n plus 1 dt. Again you write plus 5 minus 5 and separate, my dear friends, you are going to get x by x square plus 5 whole power n plus, you can write, this is going to be 2n into
1 by t square plus 5 whole power n, in the sense in you will get, fine, minus 2n into 5, that is 10n into integral 0 to x 1 by t square plus 5 whole power n dt. You see my dear friends, that is also kind of, you see, in plus 1, this is in plus 1. So you got the reduction formula here, like, so I can say x into, you see, this is the thing we need to take my dear friends, in of x is, you see, 1 minus 2n into in is equal to 10n into integral 0 to x. You see, to get the result, why don't you put here, this you got in plus 1, right. So 10n into in plus 1 you can take, 10n into in plus 1 is equal to, you can write 2n minus 1, 2n minus 1 into in minus x by x square plus 5 whole power n, kind of. Okay. Now you put n is equal to 5, you will get 50 I6 minus, you are going to get 9 I5 is equal to x into, this is going to be I5 dash, my dear friends, it is a derivative. Leibniz formula you apply, 1 by x square plus 5 whole power n, you are going to get, my dear friends. Okay. So with this you are going to get the answer here, my dear friends, x into, this is going to be 1 by x square plus 5 whole power n, it is almost like option A, my dear friends, you can say. So this is the answer, just reduction formula you need to apply. Next, you see, this is another one areas related question. You see, y is equal to log of x plus e square, and this is nothing but, so 2 e power x is equal to 2 by y, so y is equal to 2 by e power x. So you try to draw the curve, my dear friends. How to draw this particular curve? Log of x plus e square means when x is 0, the answer is 2, and like log x curve, it is going to be increasing function, whereas y is equal to 2 by e power x means when x is 0, 2 e power 0 is 1, it is 2, but it is a decreasing function, kind of. Another one is x is equal to log 2 is a vertical line, right, and he has given y is equal to 1, also he has given y is equal to 1, like this. So yeah, in the sense, friends, you will get a particular curve like this is the area enclosed between all these things. Yeah, how to find, my dear friends? You just try to find, you just find this value, this curve is equal to 1, in the sense e is equal to x plus e square, x is equal to e minus e square, integral e minus e square to, you can say this is going to be, I can say 0, right. So upper curve is log of x plus e square minus y is equal to 1 dx, you will get this area, plus integral 0 to, you can take like log 2, you see, you just see where these two are going to meet. If you take x is equal to log 2, y is equal to 1, kind of, yes. So you are going to get, this is y is equal to 2 by e power x, right, minus 1 dx. This is the one, my dear friends, you just integrate, you are going to get the answer as 1 plus e minus log 2 base e, that is it. This is the answer. Next, my dear friends, this is a standard LDE, linear differential equation. You can just take the because the function, the differential equation is like dy by dx plus p of x into y is equal to q of x, my dear friends. Integrating factor is equal to e power integral p dx, 1 by x square minus 1 dx, which is 1 by half of log mod x minus 1 by x plus 1, right, log of x minus 1 by x plus 1. So integrating factor is x minus 1 by x plus 1 power 1 by 2. So the general solution is going to be y into integrating factor is equal to integral of integrating factor into this will give you x minus 1 by x plus 1 dx.
This is a simple integral. In the numerator you can write x plus 1 minus 2, you separate, you will get the answer, and to find the constant of integration you can use this point, you are going to get y. Accordingly you can find root 7 into y of 8, my dear friends. You will get the answer to be option D. That is it. Standard LDE, you can solve it. Next, my dear friends, the differential equation of the family of circles passing through the point 0, 2, 0, minus 2. It is not a big deal. You can take like x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, my dear friends. So this is passing through 0 to 0 minus 2, means for both put x is equal to 0, you will get y square plus 2fy plus c is equal to 0. Here the roots of this must be 2 minus 2, sum of the roots 0, product of the roots is minus 4. So f0 means x square plus y square plus 2gx minus 4 equal to 0. G is the only unknown, my dear friends. You can also do like x square plus y square minus 4 by x is equal to, you can write 2g with minus, just apply derivative equal to 0, only one parameter, with first degree derivative you will get the answer here. That is it. Next, my dear friends, the tangents at 2 points AB to the circle meet at origin. Here is a circle, my dear friends. From origin, of course, two tangents are drawn if you think in a reverse direction, and then the area of the triangle OAB. This is AB, my dear friends, points of contact. Since you know this point 0, 0, circle is known, you can find the chord of contact. S1 is equal to 0, so x into 0 plus y into 0 minus 2 into x plus x1 plus 3 is equal to 0. So you can say, my dear friends, 2x is equal to 3, x is equal to 3 by 2. This is a vertical line, and you know, so you can find the perpendicular distance. This is going to be 3 by 2 itself. And moreover, from here length of the tangent, this is the point of contact, root of S11, which is root 3, my dear friends. Since it is right angle triangle, you can find this. This is 3 minus 9 by 4 under root, which is 12 minus 9, root 3 by 2 is this. When this is root 3 by 2, even this is also root 3 by 2, area of the triangle is half into base is root 3 into height is 3 by 2, my dear friends. 3 root 3 by 4 is the answer. That's it. A simple question from circles. Next, the hyperbola x square by a square minus y square by b square is equal to 1 passes through 2 root 2 comma minus 2 root 2 gives one relation connecting a square and b square. Substitute, friends, my dear friends, this is 8 by a square minus 8 by b square is equal to 1. So 1 by a square minus 1 by b square is equal to 1 by 8. This is one of the relations. Then there is a parabola whose focus is same as the focus of h. Focus of h will be AE comma 0 minus AE comma 0, right, with positive abscissa. That means there is a parabola whose focus is AE comma 0, where AE are the terms related to hyperbola. Here it is, and the directrix of the parabola passes through the other focus of h. So directrix passes through minus AE comma 0 of this. Now, my dear friends, the length of the lattice rectum of the parabola is E times length of the lattice rectum of the hyperbola. Actually, length of the lattice rectum of the parabola, this is 2a, right? This distance is 2ae into 2 you take. This is the length of the lattice rectum of the parabola. This is E times length of the lattice rectum of the hyperbola is 2b square by a. 2b square by a. E got cancelled, 2 got cancelled, you will get 2a square is equal to b square. Array yaar, these two relations are enough. You can replace b square by 2a square, or from this if you write b square by 2a square, you can take 1 by a square into 1 minus 1 by 2, which is 1 by 2, which is 1 by a square is 1 by 4. You will get a square is equal to 4. You can write b square is equal to 8. Okay. Once you know a square and b square, you can find the eccentricity E. Now then you need to find the equation of the parabola, right? It is like y square is equal to 4ax. You need, if you could find AE value,
and you know a value, you can write the equation of the parabola. Once you know this, you can find eccentricity E. You will get like, because here a square is equal to b square into 1 minus, I mean 1 plus, I mean you will get here a is smaller, right? B square is equal to a square into e square minus 1. If you just apply, you will get E value to be root 3. Now you know a and E, you see. So you will get like, you see, AE value you can write 2 root 3, and accordingly parabola will be y square is equal to 8 root 3 into x, because this is going to be length of the lattice rectum 4a is going to be this 8 root 3 comma x. Automatically you can substitute the points and verify which point lies on it or not. Okay, that's all. Next point, my dear friends, this is the equation related to the lines. This is first line known completely, of course lambda is here. Second line is known completely, but lambda is there. Be coplanar. Coplanar means on the plane you know two lines. Okay, so one of the points on it is 1, 2, 3. Other point on the second line is minus 26, minus 18, minus 28. If you connect them, you will get a vector. That means suppose this is point A, this is point C, you just connect AC bar, that is 27, this is 20, I can say 31. This is one of the vectors, and the parallel vectors on the two lines you can take B bar, D bar, that is going to be lambda 1, 2, minus 2, 3 lambda. Since these three vectors are coplanar, that is equal to 0, from which you will get lambda value, my dear friends. You will get lambda is equal to 3. Then, my dear friends, now P be a plane containing these two lines, then which of the following point does not lie on P? And once you know lambda value, the cross product of these two vectors will give you normal drs of the plane, right? If lambda is 3, my dear friends, I, j, k, you can write 3, 1, 2, minus 2, 3, 3. So you can write I cap into 3 minus 6 is minus 3, minus j cap into 9 plus 4 is 13, plus k cap into, you can write 9 plus 2 is 11. That means the plane normal equation you can take minus 3x minus 13y plus 11z is equal to, passing through one of the points 1, 2, 3 you can put, my dear friends. This is 33 minus 26, you are going to get 7, 7 minus 3 you are going to get 4. This is the equation of the plane, and now you can verify and you will see that, my dear friends, which point lies on it. That's it, you will get the answer, my dear friends. Okay, so this point will be the answer, does not lie, this does not lie. Okay, simple. Next one, a plane P is parallel to the two lines whose direction ratios are given and it contains the point. It's very simple, friends. There is a plane again, parallel to parallel vectors, and one point is given. Cross product of these two gives the normal dr of the plane, and point is available. You can find the plane equation very comfortably, right, my dear friends. Once you find the plane equation, you will get, you can find it, then P intersect the coordinate axis at the point A, B, C. So once you can find, my dear friends, you can find x intercept, y intercept, z intercept of this, so that you can find alpha, beta, gamma. V is the volume of the tetrahedron OABC, right. That means O is anyhow origin. If you find alpha, beta, gamma, volume of the tetrahedron is 1/6 of OA bar, OB bar, OC bar, 3 coterminous edges if you take. That means determinant of this you will get, that give the volume, right. So you just try, my dear friends, let me repeat, you just take the cross product of these two which give the normal drs of the plane, which you will get 4 minus 1 minus 3, right. So 4x minus y minus 3z, and passing through one of the points 2, 2 minus 2, that is 8 minus 2, 6, 6 plus 6 is 12. This is going to be the plane equation. You just see where it cuts at. So now you can say origin is fine. Alpha means, you see, where does it cut? X axis means put y coordinate, z coordinate 0, x is equal to 3. You put x 0, y 0, z is equal to minus 12.
this is 0, 0, this is going to be minus 4. So alpha, these are the points we are going to get. From this, alpha means 3, beta is minus 12, gamma is minus 4. So alpha plus beta plus gamma is going to be minus 13. P is minus 13. There are two such options. You need to find the volume also. You just try this formula to find the volume. You are going to get option B is the right answer. Okay. Next, my dear friends, S be the set of all A belongs to R for which the angle between the vectors is acute. Arey yaar, between two vectors angle is acute means u bar dot v bar must be positive, right? Because cos theta is positive. You just form the equation A into log B base E into log B base E, okay, minus 12 plus 3 into 2A, 6A into log B base E. This product must be positive given B greater than 1. So log B base E, if you take it as t, you will get AT square plus 6AT minus 12 must be positive for all t, means for all t positive. This is the expression, right? So a quadratic expression always positive in the sense, not always positive, whenever t is positive it should be. It is going to have, my dear friends, you need to solve accordingly. So whenever t is positive, right? Now I can say as well as log B base E, you have to choose that this must be positive. So a quadratic expression, that means, you see, for this is suppose A positive, it is going to be upper parabola. So we should have 0 left side of the roots, because if it is A positive, product of the roots negative means 0 cannot be left of this, right? If A is negative, it is going to be a down parabola, and that case also you can see that not possible. So finally you do not find any A that satisfy this particular condition, my dear friends. Yes. Next question, this is a question related to heights and distances. A horizontal arc is in the shape of a triangle OAB. Suppose OAB, right? Then AB is given as 16, fine. Then next, a vertical lamp post OP is erected at the point O. So here there is a vertical lamp. So angle, you see, PAO, OP is this, PAO angle is equal to PBO, means obviously these two must be equal. It is isosceles triangle. And angle PCO 45 degrees means where C is the midpoint of AB, means if you take C here 8, 8, so these two must be equal. This is going to be in isosceles triangle, the median itself the altitude, and he said angle CPO, that means CPO 45 degrees means OP is nothing but CO, right? These two are equal. Now he is asking us to find OP square. OP square is nothing but CO square. This is a right angle triangle, my dear friends. I want CO square, fine, and he has given this angle to be, you see, this angle is 15 degrees, my dear friends. So if OP is x, this is also x, you see, you can take this is 90 degrees. So cot 15 degrees you just take, my dear friends. So adjacent side, you can say this is going to be 90 degrees, right? So adjacent side, this is, I can say OA by opposite side is x. So OA is going to be x into cot 15 is 2 plus root 3, right? We know that OA is equal to this is x into 2 plus root 3, my dear friends. Now this is 8, this is x into 2 plus root 3. You just apply Pythagoras theorem, x square plus 8 square is equal to x square into 2 plus root 3, in the sense 4 plus 3, 7 plus 4 root 3 you are going to get. From this, my dear friends, you are going to get OP square, that is x square you are going to get. That is all, my dear friends. Next, this is another simple question. I can say A and B two events says that P of B given A is 2 by 5. P of B given A is 2 by 5.
So this is P of A intersection B by P of A, it is 2 by 5. P of B intersection A by P of B is 1 by 7, and he has given P of A intersection B 1 by 9 is given. If this is 1 by 9, my dear friends, P of A is nothing but 1 by 9 into 2 by 5, right? P of into 5 by 2 into 5 by 2, which is 5 by 18. Similarly, P of B is equal to, this is 1 by 9 into 7 by 1, which is 7 by 9, which is, I can say, 14 by 18. Fine, he wants option 1, P of A dash intersection B dash intersects, this is nothing but 1 minus P of A union B, right? Because this is A union B whole dash, P of A union B means P of A plus P of B minus P of A intersection B is 2 by 18, which is going to be 12 plus 5, 17 by 18 is the answer. So 1 minus 17 by 18 is 1 by 18, so S2 is correct. Now A dash union B, here you can also take the Venn diagram A, B and all, you can say this is A intersection B is going to be, this is 2 by 18, P of A is 5 by 18 means this is 3 by 18, P of B 14 by 18 means this is 12 by 18, altogether 17, so 1 by 18 outside. Now my dear friends, he wants P of A dash union B, which you can write 1 minus P of A intersection B dash. A intersection means only A, 3 by 18, 1 minus 3 by 18 is, 3 by 18 is 1 by 6, so 1 minus 1 by 6 is 5 by 6, this is also correct my dear friends. You can see that this is also correct. Next, you see this is a simple mathematical reasoning question. P is Ramesh listens to music, Ramesh is out of his village, it is Sunday, it is Saturday. Now Ramesh listens to music only if this happens means, if means implication. What implication? He is in his village and it is Sunday or Saturday, means only if he is asking, this is to be, you see, if he in his village, that is this one, and it is Sunday or Saturday, this is out of his village is Q, in his village means negation Q and R union S, and he said Ramesh listens to music is P. So this is going to be option D, that's it. Next friends, you see numerical answer type questions. Let the coefficients of the middle term of these, middle term of a binomial expansion, 4C1, 4C2 you will get 4C2 into 1 by root 6 power 4 minus 2 into beta x whole power 2. He is asking coefficients, so you no need to take x. Similarly, in this middle term means 2C1 into 1 power 2 minus 1 into minus 3 beta whole power 1. Okay. Next, in this middle term, in the sense power 6 is there, so 6C3 into, so 1 power 6 minus 3 minus beta by 2 whole power 3. That means if you could replace these numbers, 4C2 is 6, these two get cancelled. First term is beta square, second one is minus 6 beta, third one is 6C3 is going to be 6 into 5 into 4 20, 20 by 8 it is, 20 by 8 means 5 by 2 minus beta cube. These are the three terms my dear friends. He said that they form an AP, D is the common difference. If they form an AP, sum of these two is twice of this, that is minus 12 beta is equal to, you can write 1 minus 5 by 2 is going to be, minus 3 by 2, right? Minus 3 by 2, you can write beta square plus beta cube. You can write beta square minus 5 by 2 beta cube. You can cancel beta, beta cannot be 0 my dear friends. If beta is 0,
they can't be distinct terms. Then you will get a quadratic equation for beta, you can find beta value, my dear friends. Once beta is known, you can find common difference also. So 50 minus 2d by beta square you can find. Okay. Next friends, a class contains B boys and G girls if the number of ways of selecting 3 boys means BC3 and 2 girls, that is GC2, is 168, my dear friends. Then B plus 3G we want. Are here BC3 in the sense B into B minus 1 into B minus 2 into G into G minus 1 is equal to 3 factorial 2 factorial. 168 means 8 into 21, 7 into 3, 3 factorial is 6, 2 factorial is 2. You need to multiply 3 consecutive terms here 8, 7, 6, 2 consecutive terms here 3, 2 here. So B must be 8, G must be 3. You got B and G. B plus 3G he wants. 8 plus 9, 17 is the answer. That's it. Okay. Next, my dear friends, if the tangents to the points P and Q on the ellipse meet at the point, this particular point, S is the focus of the ellipse on the negative major axis, then SP square plus SQ square is equal to, you just see, my dear friends, tangents at the points P and Q on this ellipse meet at the point. This is, you see, second type of ellipse, yeah. So meet at the point root 2 comma this. So some points tangents met here somewhere, this point is given, right. So P and Q will be these points, fine, yeah. R is given this particular point. Now S is the focus of the ellipse on its negative major axis. Negative major axis is S, my dear friends. Then SP square plus SQ square we want, my dear friends. Here what we can say is, you see this particular point, you just find the chord of contact. So because this is given PQ line equation, you can find S1 is equal to 0, you apply, you will get chord of contact. Try to solve this line, this will be easy line itself. This line and ellipse equation, you are going to get the 2 points P and Q. P you will get like 1 comma root 2. In the same way, Q you are going to get like root 2 comma 0. Fine. Now you know S is going to be, S is the, you can find eccentricity. This is 0 comma AE, 0 comma minus AE. You know S, P, Q, so you find SP square plus SQ square. That means you need to find P and Q, that's it. The rest of all easy and same, right. Next, my dear friends, you see this question, this is 1 plus, if you separate 1, 49C 0 to 49C 49 means 2 power 49. Here 50C2 50C4 means 50C0 is missing, so you add and subtract 1. This is only even suffixes means 2 power 50 by 2, 2 power 49. This is, my dear friends, this is 2 power 49 whole square, 2 power 98, minus 1 plus 1 gets cancelled. 2 power 98 is given as 2 power n into m. So m must be 1, n must be 98, my dear friends. Then n plus m is equal to 98 plus 199 is the answer, my dear friends. Next, you see two tangent lines L1, L2 are drawn from the point 2 comma 0 to the parabola. This parabola is given from the point 2 comma 0. Two tangent lines are drawn, say L1, L2. Okay. If the lines L1, L2 are also tangent to this particular circle, suppose here, okay, then 17 R value. Here from an outside point you can draw a tangent, you can take like y square is equal to, you see y is equal to mx plus c kind of, y is equal to mx plus a by m, you can take minus a by m because here a is negative. So where this point passes through 2 comma 0 means 0 is equal to 2m minus a value, 4a is, I can say a is 1 by 2, 4a 1 by 8, 1 by 8m. From this you will get the value of m, my dear friends. M you are going to get plus or minus 1 by 4.
So you give one of the values, you will get one of the tangent. Now you know m value 1 by 4, in the sense in this particular case you will get the tangent equation like x minus 4y minus 2 is equal to 0. This would be one of the tangents, my dear friends. Once you know this, you know the circle equation already, whose center is 5 comma 0. You just apply perpendicular distance is equal to radius r. You are going to get r value, from which you can find 17 r value, which is to be 9, my dear friends. This is going to be 9. Next, you see this is another sequence kind of, you see 6, 10, 20, 40, 1. You see, if you just write 6 by 3 power 12, you just separate 10 plus, okay, you can take like, or 6 by 3 power 12, you just separate 10. If you take common, my dear friends, you will get 1 by 3 power 11 plus you can say 2 by 3 power 10 plus 3 by, you can say 4, right. This is 2 square by 3 power 9 and so on. This is 2 power 10 by 3 power 1. You just see, this is the one we need to simplify. You see, this is 6 by 3 power 12 plus 10 into, and here it is a GP with first term 1 by 3 power 11. And can you say the common ratio? Every time 2 is getting multiplied and 3 is getting reduced into 2 by 3. You just multiply this with into 2 by into 6, you just take into 6, you take, this is 2 into 3. So 3 1 3 gets cancelled, into 2 into 3, like that. So this is a GP with first term, you can say 1 by 3 power 11, common ratio 6, number of terms is going to be 10. So you just apply the formula. This is a into r to the power of n minus 1 by, this is 11 terms, right, r to the n is equal to 11, r to the power of n minus 1 by r minus 1. You just simplify this, my dear friends, you are going to get in the same kind of 2 power n into m, you will get L, m, n values. M, n values you are going to get to be m into n, he is asking about, right, 12 it is going to be. You can just find, my dear friends, simplify, that is it. The most important thing is separate the first term, take 10 common, it is a GP with first term 1 by 3 power 11, common ratio 6, number of terms is 11, that is it. Next, my dear friends, this is going to be, you see, the trigonometric equation. You can write tan theta plus root 5 tan 2 theta into tan theta plus tan 2 theta minus root 5 equal to 0, right. You can say, my dear friends, tan theta plus tan 2 theta is equal to root 5 into 1 minus tan theta into tan 2 theta you are going to get. You just bring this term this side. So this is going to be tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B means tan 3 theta is equal to root 5. So root 5 is not a familiar angles, one of the which what we remember. So we don't there is no problem with these angles. Now theta belongs to, you see, theta, he is asking theta belongs to S, S belongs to minus pi to pi by 2. So 3 theta belongs to minus 3 pi to, you can say 3 pi by 2. You just see where this becomes root 5. You just see the graph of this. You can take from this, you can take, right, you can say the number of solutions of this, because if you take like tan alpha is equal to root 5, where alpha belongs to closed minus 3 pi to 3 pi by 2. You just draw the graph, the number of solutions, you can just observe the graph of tan x from minus 3 pi to 3 pi by 2, it cuts at 5 places, okay. So you are going to get 5 solutions for this. Next, this is another one, z is a plus ib, a complex number where b not equal to 0, and he has given this particular condition. You just apply modulus on both sides, you will get mod z square is mod z bar 2 power 1 minus mod z is a number, this is a real number, it comes like this. Mod z bar is equal to mod z, which cannot be 0, so you can cancel 1,
you will get mod z is equal to 2 power 1 minus mod z, which is possible if mod z is equal to 1. You see, if mod z is equal to 1, this becomes 2 power 0, perfectly fits. Mod z is equal to 1 in the sense, from this condition you will get z square is equal to z bar into 2 power 1 minus 1 0, this is z bar, that means z cube is equal to 1. He said b not equal to 0, it is cube the roots of unity, but b not equal to 0 means z takes omega square values. Now you can just take the values, then the least value of n means if you take z is omega power n plus 1 plus omega means minus omega square whole power n. This is possible if you just take n is equal to 3 minus comes, so least possible value is n is equal to 6. Okay. Next, my dear friends, a bag contains 4 white 6 black balls. The balls are drawn at random from the bag. X can be the number of white balls. X is a variable, random variable. So out of 4 white and 6 black balls, 3 balls are drawn, from which the number of white balls can be 0 or 1 or 2 or 3. That is the thing. Now for this sigma square variance we need to find, so 100 sigma square, that means you need to prepare the probability distribution. Out of this 10 balls you have to draw 3, you have to get 0 white balls. 0 white ball means all must be black. This answer you need to simplify, which is 6 into 5 into 4 by 10 into 9 into 8. My dear friends, 5 2 times, 2 2 times, 3 3 times, 3 2 times, 4 2 times, 1 by 6. In the same way, you need to find the probability for other things also. For example, 1 white means 4C1 into 6C2 by 10C3 you have to find. With this you are going to get, it is 1 by 2. In the same way, 2 white means 4C2 into 6C1 by 10C3, which gives probability of 2, I mean you got x is equal to 2 value, which is 3 by 10, and 3 white ball means 4C3 by 10C3 you need to find. You will get the probability of getting 3 white balls, which is 1 by 30. Now your probability distribution is ready, my dear friends. This is p of x. So for a probability distribution function, how to find variance? Variance is sigma square is, you can write sigma xi square pxi, sigma xi square pxi minus sigma average sigma xi pxi whole square. This is the formula that you need to apply, my dear friends. Xi means these probabilities are this. Just simplify these, you are going to get 56 by 100. He said 100 sigma square means you are going to get the answer to be 56, my dear friends. That's all. Next, yeah, integral 0 to pi by 2, 60 times sine 6x by x. You can write this as 60 integral 0 to pi by 2. You can write sine 6x expansion so that you can cancel sine x and you can integrate, or you can just write sine 6x minus sine 4x by sine x plus sine 4x minus sine 2x by sine x plus sine 2x minus you can write sine 2x by sine x is also find dx, my dear friends. If you just write this, my dear friends, sin c minus sin d you apply, which is 60 times integral 0 to pi by 2 sin 2 cos c plus d by 2, sin c minus d by 2 got cancelled, 2 cos 3x plus this is 2 cos x, because 2 sin x cos x it is dx. Now you can integrate easily, my dear friends. You are going to get the answer here comfortably like 104. Okay, so you will get the answer. With this, my dear friends, we have done the questions of you see 27th dated, 28th dated question paper. Yeah, right. That's all, my dear friends.